Good morning, ladies and gentlemen. Warm greetings for the second day of Third National Conference on Healthcare Industry and Academia Summit 2022 and beyond. The conference is collaborated with Central Ayurveda Research Institute, Ministry of Ayush, Government of India. I, Priyanka Banerjee, Assistant Professor of School of Medical Sciences, Adamus University, along with my co-host. And I am Apurva Acharya, Assistant Professor of School of Medical Sciences, Adamus University. Welcome you all. Firstly, I would like to thank the Honorable Chancellor of Adamus University, Professor Dr. Shomit Ray, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Naveen Das, respected Dean, Professor Dr. Shajol Kumar Jha, the Chief Guest, guests of honors, dignitaries and experts for taking their precious time out and making to this event. Secondly, I would also like to thank my audience and participants for being present here among us today. This conference intends to deliver an excellent platform to develop the knowledge on the recent trends in the pharmaceutical discipline through the oral and poster presentation, plenary and keynote sessions. We are enthusiastic to listen to the inspiring scientific talks of our distinguished speakers that would not only transmute the whole event into a multidisciplinary platform for revolutionizing ideas, but also would spark a perception of encouragement among all to undertake certain useful exploratory works. Let us now open our minds so that we may receive the eternal wisdom. Let us open our spirits so that we may know the leading and guidance, and open our hearts so that we may receive the wonderful love. To begin this day, let us first summon the presence of Almighty with a song. This song is being presented by the faculties and students of our school. Hello. 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्
darkness of ignorance be away. Give us the light of knowledge. Let us be far from all the bad things. However much life give us, be good to all. May there be no ill between people, and there be no feeling of revenge. May we think what we have got, but what we have not, let us contribute to others. Let us give the flowers of happiness to all, and everyone's lives become a garden of sweetness. You flow the water of your compassion and make every corner of your heart pious. Well, thank you for deific Arius for letting the goodness sparks to our spirituality. To make this morning a blessed one invokes Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I invite our admirable dignitaries to please come up on the dais to kindle the lamp.
We would request. We would request all the dignitaries to please take their seats on the dais. Today, we have amongst us the chief guest of honor, Professor Dr. Debashish Bhattacharya, Director of Medical Education, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. It is an honor for me to welcome you, sir, on behalf of School of Medical Sciences, Adamus University. I would request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Naveen Das, to kindly felicitate Professor Dr. Debashish Bhattacharya. Sir, please. Thank you, sir. We have with us Shri Dharmendra Singh, Executive Council Member, Pharmacy Council of India, New Delhi, as our guest of honor for today. It is again an honor for me to welcome you, sir, on behalf of School of Medical Sciences, Adamus University. I would now request our Honorable Dean, Professor Dr. Shajol Kumar Jha, to kindly felicitate Shri Dharmendra Singh. Sir, please. We also have amongst us Mr. Debashish Bhattacharya, of Inspector of Drugs, Executive Member of West Bengal State Pharmacy Council. He is not arrived. It is a pleasure for all of us to have with us our eminent personality, Mr. Shubhendu Shaha, Director, Aspire Scientific, as the guest of honor with us among today. Sir, we welcome you, and I would request our HOD, sir, Dr. Sanjay De, to kindly felicitate. Sir, please. May I now request our Dean, Professor Dr. Shajol Kumar Jha, to kindly felicitate our Honorable Vice Chancellor of Adamus University, Professor Dr. Naveen Das. So please.
As we complete with our felicitation ceremony, moving ahead, out of this tight schedule, I would request our chief guest of honor today, Professor Dr. Debashish Bhattacharya, Director of Medical Education, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal, to please come up to the podium and share a few words and grace this occasion. Sir, please. Good morning, and it's really pleasure to be here amongst all of you in this beautiful morning. And I'm really overwhelmed seeing the ambience of the university campus, and you feel also proud to be a student of this university. As the inaugural song was telling, that the highest level you can reach with love, truly speaking. So the knowledge of spiritual knowledge and the secular knowledge, what we are learning every day, they can merge together when the concept of love is there everywhere. I will just tell you one story of St. Paul. When he was almost at the deathbed, the disciples thought that they should bring him to a podium to say something for the benefit of the humankind, which they will follow in their lifetime. So with difficulty, they could bring him to the podium, and he just sat for some time and said the word love, and this kept mum. So people thought that he is not feeling well, that's why we will take a chance next day so that he can say something for us. So they carried him back to his room, and next day again they repeated the same thing. And they requested him, sir, please tell us something which will be our blessings and we will follow in our life. He again said, love. And he stopped there. And all of the people were really astonished what else he is going to tell. He's not saying anything. Then they, with the utter request, they just told, sir, please tell something. Please tell something. Then he said, there is nothing can be told beyond the word love. So the question which I am wanted to is tell us that what you do, whether you're doing your studies, you're doing your exercises, you're having a relation with the people who are going to serve, because you will be working in the field of medical sciences. So medical sciences, truly speaking, we are fortunate enough to get a chance to serve the people, which is truly speaking the concept of Ramakrishna mission also. Lord Ramakrishna conveyed his message through Swami Vivekananda, and with the blessings of Ma Sharada, he took over the whole world with the concept of making everyone together, understanding the feelings of each and every religion. So this of the concept of love, if is not percolated amongst all of us, if we cannot feel that each and everyone, whether it is a student and a teacher relationship, whether it is a parent and the son and daughter relationship, whether it is a patient and doctor relationship, whether it is a nursing and the patient relationship, everywhere where you go, if the binding of love is not there, we cannot serve people. And serving people as a field in the medical sciences is the most important, that will not only give you the feelings that really you are by your fellow members of your nation,
and also that will increase your quality of your knowledge and automatically will elevate you in the spiritual level, which the song told that it is not that इतना जग्गा किया, इतना मंत्र उच्चारण किया, कुछ भी नहीं है. You start loving, and that will change the whole of the world. Thank you, and wish I pray this university should really bloom to this maximum, and both government universities and the private institutes will work together for the betterment of education of the state and the nation, and ultimately the whole of the nation. Thank you. Pranam. Thank you so much, sir. Now, I would request Dr. Partho Roy, Associate Professor of School of Medical Sciences, to please come up on the podium and share a few words. Sir, please. A very good morning to all the distinguished guests, the dignitaries, as well as all the participants, my fellow students. And there are a lot of other departments also associated to make this event a grand success. So my sincere thanks for their cooperation and support. I know that the DME sir is going to leave us. I thankfully acknowledge that he has given us time for at least some time to encourage us. And what DME sir has told from his speech also, that I just want to extend on that whenever we were organizing some event, we tried to contact him, and he was always there for our love and support. So I request, sir, it is your love and support that is helping us to grow. And as per the dynamic Chancellor and Vice Chancellor, sir, that we are always ready to pursue excellence in academics and research, no matter at what cost. That is for our students, and that is for our all faculty members. So I can assure you, sir, with your love and support, we will definitely try to grow, and we will provide a distinguished platform in the global scenario also to Adamus University. Thank you, sir. Thank you for gracing the occasion. I also thank all the dignitaries who took out their time to grace the occasion. Thank you. Sir, I would request you once again to please come up and kindly present a token of appreciation to our speaker. Sir, please. A big round of applause. Thank you. আমি থাকতে পারলে আমি নিজে খুশি হতাম। ভালো থেকো, সবাইকে নিয়ে ভালো থেকো, সবাইকে ভালো রেখো, এটাই ভালোবাসা রইল। With warm greetings and amidst your claps and applauses, I would like to welcome our mainstay and pillar, Professor Dr. Naveen Das, Vice Chancellor of Adamus University, to share a few words on this occasion. Please, sir. Thank you very much. Distinguished visitors and guests on stage, it would have been nice if Professor Dr. Debashis Bhattacharya would have been there for some more time, but I'm sure due to some pressing needs he had to leave the program. Mr. Dharmendra Singh, our industry partner and brother-in-arm, so to say, from Aspire Scientific. Dr. Shajul Kumar Jha, my dear colleague, faculty colleagues, and my dear students. How many of you, my dear students, this is a question to you,
how many of you have heard about a person by the name Louis Pasteur? Easy question, right? This is the first question. I'll ask you more questions. So, how many of you have heard about or heard the name of Louis Pasteur? I'm sure you must have heard the process of pasteurization. Okay. So I'm talking about him. About 200 years ago, almost at the same time, 200 years ago, at the same time, or these months, November, December, this great man was born in France. He was a French chemist and a French biochemist rather, of international repute, and perhaps one of the foremost saviors of humankind. He is also sometimes called the father of bacteriology. It was he who said that, or who discovered that the diseases, the main reason for diseases are microorganisms called, or microbes. He once said that chance favors only those who are prepared. Louis Pasteur said that chance favors those who are prepared for it. Unfortunately, 2.5 years ago, humankind was not prepared for the kind of storm that we all had weathered. Today, 2 years down the line, I can see none of you, particularly the students, are wearing the mask. Even I am not wearing. There is only one student there in red sweater who is wearing a mask. And see how we have weathered. We are all survivors. And for the first time in history, perhaps, we have understood how important is healthcare. How important is to be healthy and in full spirit, rather than getting treated because of illness. For the first time, humankind realized that it is equally important to be healthy and well, rather than get treated when we are unwell. Medicine and allied fields like yours, or healthcare industry in general, have gone through many changes, transformed itself from the days when people thought that it was because of witch and black magic that people fell ill. Today, we know that the physician is not the all-knowing expert. Physician is no more the all-knowing expert. Along with the physician, evidence-based medicine, information technology, and whatnot have come up to the rescue of humankind. All of you who are going to play a dominant role in this healthcare industry, this $4 billion industry worldwide, you are the pillars of this society. You are the people who will be responsible for a healthy population. Recently, the world has crossed 8 billion population. I'm sure many of you know. Just a few days back, the world population crossed 8 billion, and it's a landmark. We are, I won't say we are hoping, but definitely we are seeing a future where in about 20 to 30 years' time, the population of this earth is going to be near about 10 billion population. 10 billion. Even if 1% of 10 billion, 1% of 10 billion people fall ill, it's an astounding figure that we are talking about. It's an astounding figure not only for the world, but more importantly for the developing world, of which we are all a part of. We are all aware of the doctor-patient ratio. We are all aware of the footprint that each of these hospitals have. We are all aware of the kind of investment each molecule, each drug, the whole process of drug discovery takes. We can ill afford even a rupee of wastage. We can ill afford even a rupee of wastage because of quality.
We can ill afford even a rupee of wastage because of lack of efficiency, proficiency. And these are the guidelines for all of you, my dear students. Remember, you are fortunate to be a part of an industry which, so to say, is the savior of mankind. As the population grows, our illnesses will also grow. Look at the types of illnesses that have come up, even in our lifetime. Yes, on one hand, new illnesses, new diseases are coming up, but at the same time, we are also taking control of old diseases. Earlier, people used to die of polio, die of chickenpox. Smallpox is more or less eradicated, hopefully. So, while on one hand, new diseases are inflicting on humanity, it is our endeavor, it is our ingenuity that we are also taking control on many of these diseases thanks to you. Be a soldier for humanity, and the humanity will shower you with all the love and affection that my previous speaker, the dignitary, spoke about. Dispense your duty with love, but most importantly, be a professional, a thorough professional of the healthcare industry. It is the crying need of time. It is the crying need of the world. Thank you very much for this great occasion, and I'm feeling really blessed to be a part of this. Thank you. Thank you, sir. I would request the presence of Mr. Debashish Bhattacharya, Inspector of Drugs, Executive Member of West Bengal State Pharmacy Council, Core Member or Core Committee Member of PCI. Now, sir, I would request your presence on the podium, please. I would also request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Naveen Das, to kindly felicitate him. Sir, please. Now, I would like to request our guest of honor, Shri Dharmendra Singh, Executive Council Member, PCI, New Delhi, to grace this occasion with his talk. So please. हेलो गुड मॉर्निंग यार बच्चे, पहले तो ये समझो कि तुम लोग में जोश नहीं है। इस एज में अगर जोश नहीं होगा तो फिर बाहर चले जाओ, ठीक है? तो मैं जब गुड मॉर्निंग बोलूँ तो गुड मॉर्निंग मत बोलना, सजल सर को देखना। अगर सजल सर गुड मॉर्निंग करेंगे तब तुम लोग करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। सजल सर नहीं बोले तो आप लोग नहीं करोगे क्या? हैं बोला? क्योंकि मैं देख रहा था वो ताली बजाने के लिए भी तुमको दिखा रहे थे, ताली बजाओ। अब ये भी कमांड तुम लोग को देना पड़ेगा बच्चे लोग। ये आप लोग रॉबोट थोड़ी हो ना, हैं? आप लोग अपने थिंकिंग में दौड़ो। आपके दूर से इतने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हुए हैं, ताली बजाने के लिए भी बोलना पड़ता है। ताली बजाने से दो फायदा होता है, नींद भाग जाती है। आप जो नींद में सोए रहते हो ना, वो भी भाग जाती है। तो एक बार जोर से अपने लोगों के लिए ताली बजाओ जरा। वेरी गुड। और एक बार बोलो वंदे मातरम। आवाज नहीं आई, आवाज तो पाकिस्तान तक जाना चाहिए था। वंदे मातरम।
यस अब मैं चलूं आप लोगों का आज के टॉपिक के पर कि चलूं कि आप लोग पे चलूं। चूंकि मैं पीसीआई मेंबर हूं और ईसी मेंबर हूं तो बहुत सा एक्सपेक्टेशन होगा। एक बार मुझे लगता है कि कुछ फार्मेसी के बाहर के बंदे भी आ गए, तो जो फार्मेसी के बंदे होंगे वही हाथ उठाएंगे। फार्मेसी के जो बंदे होंगे वही हाथ उठाएं। सारे हैं। ये यूनिवर्सिटी तो बड़ा अच्छा है। हम लोग क्या करते थे अपने जब पढ़ते थे सर, जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे, बाहर से लड़के लाते थे, क्योंकि फार्मेसी के बच्चे तो सुनते नहीं हैं। हाँ, ये ऑडिटोरियम भरने के लिए सर, तो बाहर से बच्चे लाते थे और वो लोग बहुत जोर जोर से ताली बजाते थे। तो मुझे समझ में आ जाता था ये बाहर का आदमी है, भाड़ा का आदमी है। तो आप लोग तो अपने आदमी है तो ताली मत बजाना, ठीक है? ठीक है जी। तो बांग्ला बोलो एक बार, बोलो। देखो भैया, भाषा वो होता है जो आपको और मेरे को समझ में आ जाए, और भाषा वो नहीं होता है जो मैं बोल के चले जाऊं और आप लोग बोले ऐसे छिलो किचु बोकलो और चले गलो। ঠিক আছে? এবার আমি বুঝলাম আপনারা বাংলা অনেক প্রেম করো, ঠিক আছে তো? क्योंकि दो डिस्टिंग्विश गेस्ट जो बोले लव के बारे में बोले, है ना, प्यार करो प्यार करो प्यार करो। আমি ভাবলাম এই প্যারটা কি ভাই, এই প্যারটা কি, কিসের জন্য প্যার করতে হবে? তো সব ছেলেগুলো সোচছে কি আচ্ছা আচ্ছা এবার আমাদেরকে চান্স হয়েছে। তো ওইটা পার না, প্যারটা হলো বুকের সঙ্গে, বই আছে না, বইয়ের সঙ্গে প্যার করো, ঠিক আছে? এইবার আবার যদি পড়বেন না না তো আমাদের দো মেম্বার এসেছে পিসিআই থেকে, একটা দেবাশিস স্যার একটা আমি। এবার যে কোর্স আসছে অনেক টাফ, ঠিক আছে? তো তোমাকে কেউ সহযোগ, সজল স্যার भी সহযোগ করতে পারবে না যদি তুমি পড়বে না। তো তোমার হলো এবার সোলজার মতন ডিউটি, ঠিক আছে? যখন 9:30 তুমি প্রিমিসেস ঢুকছো আর 5 o'clock বেরিয়ে যাচ্ছ না, 5 o'clock এগিয়ে 5:30, আচ্ছা গুড, 5:30 বেরিয়ে যাচ্ছ, ওর মধ্যে কত সময় আছে তোমাদের? কত সময় আছে? 8 hours. Now we don't count it in 8 hours, we count as an hours, like for the period, what period you are getting, right na? How many hours this teachers are giving you in time in the, what do you say, in the schools and on the labs, we count that one. If the teachers are not giving, you are supposed to write to us. You all students I am saying, বাংলাতে বুঝো, যদি টিচার্স পড়ান না তাহলে আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমাদের পোর্টাল খুলে আছে, স্টুডেন্টস পোর্টাল, শুধু এটা টাইপ করে দাও। কি করবে? টাইপ করবে। কি করবে? আমরা অনেক পড়াই, আমাকে বলো টিচারকে পড়াতে হবে না, ঠিক আছে? তো ওইটা ঠিক আছে না? আমি বলছি যা ইনফরমেশন তোমরাকে চাও আমার পিসিআই থেকে আপনারা জানতে পারবেন, ঠিক আছে? ছেলেগুলার জন্য বলছি, क्योंकि আমি ছেলেগুলাকে অনেক ভালোবাসি। ওইটা যে আমাদের 2 ডিস্টিংগুইশ গেস্ট বললো ওইটাই ভালোবাসি আপনাদেরকে, কি ভাই আপনারা যত কষ্ট আছে, কষ্ট স্টুডেন্টস তো কষ্টই আছে না, তো যত কষ্ট আছে একটা বার লিখো আমাদেরকে, পিসিআইকে লিখো कि এই सिलेबस हमारा चेंज करते होवे, यही हमारा जानो। और आपको मैं बता दूं इस बार कि हम लोगों ने बहुत चेंजेस किया है पीसीआई में और क्यूरिकुलम में भी। आपको याद होगा कि अगर कोई जानते होंगे, मैं सेकंड बार आया हूं आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है? जानते हो कि नहीं? क्योंकि नया फेस दिख रहा है, कुछ नहीं जानते हो तो इसीलिए मैं बोला भाड़े के कोई नहीं ना आए हो। फर्स्ट ईयर में नहीं था ना, तो ये फर्स्ट ईयर जो होता है ना बड़ा क्रूशियल टाइम होता है बॉस। क्रूशियल टाइम इन द सेंस होता है जब हम लोग पढ़ते थे ना तो फर्स्ट ईयर में बंकिंग में आता था खूब, वो गोलगप्पा वाला छोला वाला, उसको वो हमें याद रखता था, क्योंकि हम क्लास में कम रहते थे, उनके पास ज़्यादा रहते थे, और मम्मी पापा के पास पैसे होते नहीं थे तो उनसे लड़ते थे कि 4 आना का सिंगाड़ा क्यों देते हो, तो 10 पैसा का सिंगाड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग के साथ वो नहीं है, आप लोग तो जेल में हो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर जब बाहर जाओगे, जब आप 5:30 बजे पढ़ लोगे, पढ़ा लिए जाओगे तभी जाओगे, ठीक है? कुछ हंसी नहीं आ रही है बच्चे लोग में, कुछ लगता है मैं ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ। अभी जो आने वाला सीजन है बॉस आप लोगों का बहुत टफ है। आपको मालूम होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम हम लोग बहुत जल्दी ले आए हैं, मालूम है ना बच्चे लोग हैं? यस सर।
एग्जिट एग्जाम का मतलब होता है यहां भी पास करो, फिर हमारे क्लास में भी पास करो। अगर दोनों जगह फेल कर दिए तो आप सिर्फ फार्मासिस्ट कहलाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे, जो कि आप वेस्ट बंगाल जो आपका स्टेट काउंसिल है, जो सर्वे देखते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाइएगा अनलेस एंड अनटिल आप एग्जिट एग्जाम हमारा नहीं पास कर पाते हैं। तो ये डिप्लोमा के लिए था, बट वेरी शॉर्टली हम लोग B.Pharm के लिए भी लाने जा रहे हैं। थोड़ा हंसी थोड़ा रोक लेना। और ये हम लोग B.Pharm के लिए भी लाने जा रहे हैं। अगर मैं रह जाऊँ इसी मेंबर में तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके B.Pharm कोर्स के लिए भी आपका एग्जिट एग्जाम लाऊंगा। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना तो देख लेना वो आ जाएगा। मैं उस भूमि में हूं, मैं उस भूमि में है जहां यू शुड बी प्राउड। यू आपना प्राउड करते पारबेन क्यों? बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहां पे आपका पहला इंडस्ट्री घोषित किया गया था। हमारे इंडिया में सबसे पहला इंडस्ट्री कहां था? आपके बंगाल में था। हमारे यहाँ नहीं था, झारखंड में नहीं था, आज भी नहीं। हम तो बहुत डिप्राइव्ड आदमी हैं, हम तो बहुत पिछड़े आदमी हैं। आप तो बहुत, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू योर बंगाल कि आपको पहला इंडस्ट्री आपके बंगाल केमिकल्स यहाँ दिया गया, राइट है ना सर? और दूसरा प्राउड भी ये भी है कि लेबोरेटरीज भी यहीं दिया गया। पहला लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी, वो भी बंगाल का ही था। तो आप समझिए कितने आप लोग प्राउडफुल हैं और मोमेंट्स आपके हैं। और मैं अभी लास्ट टाइम आया हुआ था एक सेमिनार में आपके बंगाल में ही, तो मैंने देखा एक साइंटिस्ट जो कि कोविड में हमारी जान बचाए, वो भी आपके बंगाल में थे, पुरुलिया के संदीप नंदा। तो आपको तो बंगाल के हर समय प्राउड रहते हैं। आपके यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। खाली कमी है आपकी पढ़ाई की। पढ़ाई में आप लोग बहुत थोड़ा से पहले आगे थे, अब पीछे हो गए, है ना? थोड़े आगे थे, अब पीछे हो गए। क्योंकि मैं जब भी पूछता था, मैं जब बंगाल आता था, बाबा सुने तुम्हें क्यों करो? ओ पढ़े, ठीक है। फिर पूछता था, बाबा तुम्हें क्यों कोच? पढ़े। अभी पूछता हूँ क्या करता हूँ? और सर्चिंग जाओ। अभी पूछता हूँ, जब भी पूछता हूँ बच्चे लोग से क्या करते हो? सर আমি অনেক টেন্স। बोला क्या ना, क्यों ना पढ़लाम, चाकरी নাই, चाकरी নাই, क्यों ना पढ़बो? तो আমি भावलाम भाई कि अभी जो हमारा जो मिशन है वो है स्पेशलाइजेशन मिशन। मैं सभी टीचर्स को भी बता दे रहा हूँ कि अब जो हमारा करिकुलम आएगा वो स्पेशलाइजेशन मिशंस में आएगा। अगर बच्चे जो भी कोर्स करना चाहेंगे, मान लीजिए इंडस्ट्री जाना चाहते हैं, तो आफ्टर उनको सेकेंड ईयर से उनको इंडस्ट्री कोर्स का एक पढ़ाई पढ़ाया जाएगा। अगर टीचर्स में जाना चाहते हैं तो उनके टीचिंग लेवल में जाना पड़ेगा। ये चेंजेस आ रहा, ठीक है? ये चेंजेस आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। और पीसीआई हर समय आप लोगों के लिए, हर समय आप लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप लोगों को जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग हमको भेजते रहें। और आप विश्वास मानिए, पीसीआई अब जो है वो जरा बदल चुका है, सुधर चुका है, लेकिन सुधारने की जिम्मेवारी भी आप स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के लिए है। अभी आप लोग फैकल्टीज़ वाले जितने भी हैं यहाँ जानते होंगे कि अभी जो भी हम लोग ने किया है वो फैकल्टीज़ के लिए किया है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ स्टेक होल्डर्स, कॉलेज लोग से, कि अगर थोड़ा सा हम लोग ने हार्ड किया है तो आपके बेटरमेंट के लिए किया है, वो आपके बेटरमेंट के लिए किया है। और उसको मैंने सुधारा भी है और भी और सुधारूंगा थोड़ा आप लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं यही बोलता हूँ कि बच्चे जो हमारे टीचर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम में नरिशमेंट मिले, हैंडसम सैलरी मिले, घर जाएं अपने बच्चे लोगों को सैलरी दे। और टीचर से भी यही उम्मीद है कि भाई आपको जो सैलरी दिया जा रहा है उसको प्रॉपर यूज़ बच्चे लोग पे डालो। ऐसा नहीं कि पैसा बांट दो, बट स्टडी दो, ठीक है? झूठ मूठ का वो पढ़ाने वाली टाइम ख़त्म कर दो, पढ़ाओ। आपके बच्चे आगे जाएंगे तो आपको प्राउड होगा। क्योंकि मैंने देखा कि किसी पीएचडी वाले पूछता हूँ, सर आपके पीएचडी कौन है आपके बॉस? तो वो बताते हैं सर मेरे ये सर हैं, ये सर हैं। तो वो प्राउड मोमेंट होता है। तो वही सारे टीचर्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि सर आप लोग ऐसा दो कि बच्चे को घर में ट्यूशन नहीं करना पड़े। वो फिर आपको क्वेरी नहीं करें कि बच्चे कि सर ये प्रॉब्लम था फेसिंग की चीज़ बताओ, टेक फिर क्या होगा बोल। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ट्यूशन चालू है, तुम ट्यूशन रूम में आ जाओ और मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर वो शिकायत अगर कहीं मिल जाती है तो मेरे ख्याल से वो कॉलेज को भी गलती अपना स्वीकारना चाहिए और सुधारना चाहिए, ठीक है? मतलब स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, क्लासरूम में डाउट्स, एनी डाउट्स है वो क्लियर होके ही निकलना, ठीक है? वो बाहर में नहीं, बाहर गया वो जाके बोला ये टीचर जो पढ़ाया समझ में नहीं आया, चलो ट्यूशन पढ़ते हैं। फॉर ट्यूशंस यू आर नॉट देयर।
टीचर्स यहाँ हैं, आपको क्लास में एवरी डाउट क्लियर करेंगे और आपके जो भी क्लासेस होते हैं उसका एक इवोल्यूशन कराएं। मैं सजल सर से भी बोलता हूँ, हर जैसे बच्चे लोगों का हर मंथ का इवोल्यूशन होता है ना किताब कॉपी का, वैसे इन लोगों का भी इवोल्यूशन कराएं आप लोग, हर टीचर से उनको मार्किंग दें, उनके नोटबुक पे मार्किंग दें, तब उनको मालूम होगा वाई दे आर ब्लेमिंग एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑफ दैट वन। उनको हर मंथ उनके नोटबुक को चेक करो, उनके नोटबुक में देखो वो गप्पा मार रहे हैं कि गोलगप्पा लिख रहे हैं कि आपकी ड्राइंग बना रहे हैं। होता है ना कि आप पढ़ा रहे हैं, वो आपकी ड्राइंग बना रहे हैं। क्या बच्चे सर की ड्राइंग बनाते हो, सर की मिमिक्री करते हो ना कि नहीं करते हो? তোমরা করো কি করো না, ড্রয়িং বানাও স্যারকে? না না, আমরা তৈরি করেছিলাম। তোমরা কি করবে? তোমরা তো কিছু করতে পারবে না। আমরা তো অনেক করেছিলাম, তাই জন্য আমরা এদিকে এসেছি, তোমরা ওইদিকে বসেছে। আমরা অনেক করি, আমরা ফাইটিং করলাম, আমরা সব করি। তোমরা তো কিছু করছো না, তোমরা তো ওই কি বলে 2 मिनट्स নডিউল আছে, ओनली 2 मिनट्स। पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर नहीं पढ़ाई समझ में आती है, टीचर्स को वहीं लॉक रूम में बंद कर दो कि सर आप बाहर नहीं जाएगा जब तक मुझे डाउट नहीं क्लियर कराएगा। एंड आई थिंक आपके जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत टफ है पढ़ाई में। मैं तो बंगाल के हर जगह जाता हूँ और इंडिया में भी जाता हूँ। आपका जो यूनिवर्सिटी है पढ़ाने के लिए बहुत टफ है, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आप कैसे ग्रैब करते हैं, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। आई मस्ट थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑल्सो ऑफ द फैकल्टी ऑफ योर एडमस, क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट मिला है वो आपकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। आप पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, आप पूरे टाइम देते हैं बच्चे लोगों को, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, उसको कान पकड़ो और मारो दो जा पढ़, क्योंकि वो आपका नाम खराब कर रहा है। उसको बाहर कर दो, 60 आपको दूसरा स्टूडेंट मैं दे दूंगा, मैं भेज दूंगा एडमएस में। ये बच्चे लोगों को बाहर करो, पढ़ना नहीं जानते हैं, बाहर करो उसको, ठीक है। और जो भी टफ है वो हमारे जो सेंट्रल यहाँ के सीसी मेंबर है वो बताएंगे, क्योंकि बंगाली में है, उनकी भाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। हमारी भाषा आधा टूटी फूटी है, दास सर जैसा। दास सर हमारे घर के बगल के हैं, हमको बहुत प्राउड लगा कि मैं अपने घर के बगल के आदमी के साथ खड़ा हूँ आज, है ना, तो मुझे बहुत प्राउड लगा। और मेरे झारखंड से भी एक मित्र आए हुए हैं, उनका भी कॉलेज चलता, निरंजन सुतार, कल वो यहाँ पे थे, तो आई मस्ट थैंक्स टू हिम ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंस्पेक्टर ऑल्सो। और मैं देख रहा हूँ सर बंगाल में बड़े अच्छे इंस्पेक्टर्स निकलते हैं, तो आई मस्ट थैंक टू स्वरूप मुखर्जी ऑल्सो, स्वप्निल मुखर्जी। तो ये हमारे गुड्स बुक्स में हैं और ये पढ़ाते अच्छे हैं, एनएसएफ में हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, आदमी भी अच्छे हैं, हर समय स्माइलिंग रखते हैं, इनको डांटो भी तब भी हंसते हैं, अच्छे टीचर्स हैं। इनको सैलरी नहीं भी मिलता ना सर, तब भी हंसते हैं। तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा आदमी है। चलिए एक बार बोलोगे कि आप लोग लंबा चल जा रहा है, इसलिए यहीं विराम देता हूँ अपनी बातों को। मैडम भी चढ़ रही हैं, बोला अनेक हो गए बाबा, छेड़ो एबार माइकटा, ठीक है। तो एबार छाड़ची, एबार बोली जय बंगाल। यार सुनेगी तुम्हारी चीफ मिनिस्टर, बड़ी मार मारेगी, तुम लोग इसको भी नहीं बोलती हो। एक बार बोलो जय बांग्ला। यार तुम लोग बाहर गए हो क्या, बाहर गए हो क्या? बोलो जय बांग्ला, भारत माता की। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would request our Dean, Professor Dr. Shajul Kumar Jha, sir, to kindly present our chief guest, Shri Dharmendra Singh, sir, with a token of appreciation. May I now request Mr. Debashish Bhattacharya, Inspector of Drugs, Executive Member of West Bengal State Pharmacy Council, to share a few words with us. So please. Good morning to all of you.
and my best wishes to all of you, because you are the first beginner of this profession, pharmacy profession. So you will go a long way, we all hope so. So all of you, as sir said, are the first year students, isn't it? আপনারা সবাই ফার্স্ট ইয়ারের তো মিক্স আপ আছে। তো যাই হোক, ধর্মেন্দ্র স্যার বললেন পিসিআই সিলেবাস সত্যিই ভালো হয়েছে আগের চাইতে, এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যাতে পৌঁছয় ফার্মেসি প্রফেশন, সেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার, ইসি মেম্বার সকলেই সেটা মাথায় রেখেছেন। এক্সিট এক্সামিনেশন, এটা ভয় পাওয়ার কিছু নয়, স্যার একটু হয়তো ইয়ার্কি করেই বলেছেন, এটা যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কেননা এটা কন্টিনিউয়াস একটা এডুকেশন প্রসেস এই প্রফেশনটা। সো কন্টিনিউয়াস এডুকেশন যদি না থাকে, তা নলেজ বেস ইনক্রিজ করে না। তো সেই জন্য এটা একটা পরীক্ষার হিসাবে ভাবার ব্যাপার নয়, এটা আমাদের প্রফেশনাল ফিল্ডে আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা ইভলিউশন হতে হয়। তো এটা একটা খুব ভালো জিনিস ইনিশিয়েট করেছে পিসিআই। আমি স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের মেম্বার হিসাবে বিগত 12 বছর ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলের সাথে যুক্ত রয়েছি। তো ফার্মেসি প্রফেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, যদি আমরা পশ্চিমবাংলার দিকে তাকাই, আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছিলাম পশ্চিমবাংলা বিফার্ম পাস করার পরে, তারপরে কিন্তু গুজরাট মহারাষ্ট্রে গিয়ে চাকরি করেছি। তো এই একটা ফ্যালাসি আমাদের আছে যে আমাদের বাইরে যেতে হয় ইন্ডাস্ট্রির বেসে। তো সেখানে গিয়ে দেখেছি আমাদের এখানে ল্যাবে ওয়াটার টেস্টিং করার জন্য বিকার হাতে নিয়ে রাস্তায়ও দাঁড়িয়েছিলাম। সকালবেলার যে জলটা আসতো সেই জলটা ওয়াটার টেস্টিংয়ের জন্য নিতে হতো। সো ফার্স্ট অফ অল ইগো শিফট করতে হবে। ইগো সবার চাইতে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের যে পার্সোনালিটি ট্রেট আছে এটাকে মডিফাই করে দিতে হবে, যে আমি এই কাজ করব না, আমি ওই কাজ করব না। পড়াশোনা অনেকেই শিখবে, কিন্তু যে পড়াশোনাটা আমরা শিখছি এখন অনেকটা সায়েন্টিফিক বেস অনুযায়ী পিসিআই ফরমেশন করেছেন, কিন্তু পড়াশোনার সাথে সাথে যেটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে হবে, ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট। কেমিস্ট্রি, মলিকুলস, ড্রাগ ইন্টারাকশান, ড্রাগ ফুড ইন্টারাকশান, প্রত্যেকটা জিনিস জানো না। এখন যে আজকের আলোচনার বিষয় যে হেলথ যে পার্টটা রয়েছে, হেলথের পার্টটা যদি হয়, কারণ আগে ছিল ডিসপেন্সিং পার্ট, তো ডিসপেন্সিং পার্ট এখন অনেক জায়গায় আছে। তো এখন তো প্রোডাক্ট বেস থেকে সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে। সো প্রোডাক্ট বেস থেকে যেহেতু সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে, সেহেতু কতগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। সার্ভিস মানে কি? সাম স্যাটিসফ্যাকশন ইজ রিলেটেড উইথ দ্য সার্ভিস। হোয়াট স্যাটিসফ্যাকশন? পেশেন্ট কাউন্সিলিং, পেশেন্ট আউটকামস। আমরা জানি যে কোনো ড্রাগ থেরাপি ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয়, মেডিকেশন এরর হয়। আপনারা এখানে যারা প্রথম ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার বা মিক্স আপ ইয়ার আছেন, আপনারা যদি ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিতে আসেন, হোপফুলি আমাদের ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি হয়তো পিসিআই ইনিশিয়েট করেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়তো করবেন, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিল সেই হিসাবে কাজ করছি। তো এই যে মেডিকেশন এরর, এই মেডিকেশন এররের কারণে হসপিটালাইজেশনের স্টেইংটা বাড়ে, বেড অকুপেন্সি রেশিওটা হ্যাম্পার করে। আমরা অনেকেই হয়তো বিষয়টা সেভাবে দেখি না, ইভেন গভর্নমেন্টও হয়তো সেভাবে ভাবেন না। শুধুমাত্র ফার্মাসিটা কিন্তু কমিউনিটি বা হসপিটালের আউটডোর এই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। ইট শুড বি অ্যাটাচড উইথ দ্য ওয়ার্ড ফার্মেসি, বেডসাইড ফার্মেসি, যেটা আমাদের এখনও ইনিশিয়েট হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিজিশিয়ানস এবং নার্সের সাথে কোনো ফার্মাসিস্ট অ্যাটাচড না হবে রিগার্ডিং ডিসিশন মেকিং, রিগার্ডিং ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জায়গাটা কিন্তু অ্যাচিভ হচ্ছে না। তো এটাকে অ্যাচিভ করতে গেলে প্রথম যেটা করতে হবে, আমাকে বোঝাতে হবে স্টেক হোল্ডারের কাছে, লুক উই আর রেডি। সো আমরা কি রেডি? আমরা যদি আজকে ফার্মেসিগুলোতে দেখি বা যাই, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায়, খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফার্মাসিস্টরা ভাড়া দিয়ে রেখেছেন, তাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভাড়াতে চলছে। আমি নিজে ইন্সপেক্টর অফ ড্রাগ হিসাবে অনেকের কাছেই অনুরোধ করেছি, দয়া করে ফার্মাসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডটাকে ভাড়া দেবেন না। অনেকে লাইসেন্স বলে, ফার্মেসি লাইসেন্স।
So license is different and registration certificate is different. এই নলেজটা রাখতে হবে। তো এখানে ভাড়া দিয়ে চলে গেলাম, আবার অন্য জায়গায় একটা কাজ করলাম, এই যে পার্সোনালিটি ট্রেডটাকে চেঞ্জ করতে হবে। আমিও ফার্মেসি প্রফেশনে ছিলাম, অনেক লড়াই করে উঠেছি, কিন্তু কোনোদিনও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভাড়ায় দিইনি। তো ছোট ছোট বিষয়, পড়াশোনা থাকবেন, স্যারেরা আছেন, এক্সপার্টরা আছেন, শেখাবেন। আউটসাইড দ্য ফোর ওয়ালস অ্যাক্টিভিটি করতে হবে। কি অ্যাক্টিভিটি করতে হবে? নলেজটাকে বাড়ানোর জন্য যা যা প্রয়োজন সেটা করতে হবে। আমি একটু আগে শুরুতে বললাম যে বিকার হাতে নিয়ে জল টেস্ট করার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম, আবার এইচপিএলসিও রান করিয়েছি, আবার কোথাও কোথাও ফর্মুলেশন শেখার জন্য নাইট শিফটও থেকে গেছি। কেন শুনেছি কোনো এক দাদা এক্সপার্ট, উনি ময়েশ্চার কন্টেন্ট হাতে ধরে বলতে পারতেন গ্র্যানুলেশনের। সো এটা ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসপেক্টে আমি বলছি। ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টে বলি, আমি ফার্মাসিস্টেরও কাজ করেছি, আমি হসপিটালে বিং আ ফার্মাসিস্টেরও কাজ করেছি। কোনো এক নার্স সে এসে আমাকে বলল আমাকে 30টা সার্টালিন দিতে হবে। তার কাছে কোনো কাগজ ছিল না, কোনো প্রেসক্রিপশন ছিল না, কিছু ছিল না। তো আমরা জানি অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস বা সাইকোট্রপিক এজেন্টস, যেটা আপনারা পড়েছেন বা পড়বেন, সেটা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করে, অ্যাডিকশন করে, তার অনেক রকমের অ্যাকশনস রিয়াকশনস আছে। তো কোনো মেডিসিন উইদাউট প্রেসক্রিপশন, সেটা শিডিউল এইচ বা শিডিউল H1 যদি হয়, আমি বিনা প্রেসক্রিপশনে আমি ডিসপেন্স করতে পারি না। তো আমি রেজিস্ট করেছিলাম হসপিটালে, তো ফর দ্যাট আমাকে শোকজ করা হয়েছিল। তো আপনাদের অনেক কিছু চ্যালেঞ্জেস সামনে আসবে, এটাকে আপনারাই ওভারকাম করবেন আপনাদের পার্সোনালিটি এবং নলেজ দিয়ে। এটা আমার একান্ত অনুরোধ, এটা করবেন। কারণ আপনি যদি চেঞ্জ না আনেন, তাহলে আপনার দেখা দেখি আপনার পরের প্রজন্ম চেঞ্জ করবে না, তারা কিন্তু সেমভাবে সেটা কিন্তু ফলো করতে থাকবে। একটা ফিয়ার সাইকোসিস কাজ করবে। আজকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ইনফেকশনস যেভাবে বাড়ছে, ইট ইজ কনসার্নিং অ্যান্ড অ্যালার্মিং। আজকে অ্যান্টিবায়োটিক ইরেশনাল ইউজ হয়, ইভেন আমাদের বাড়িতেও আমরা দেখেছি, আমাদের বাড়ির লোকজন অ্যান্টিবায়োটিক্স খুব ইরেশনালি খান। তো ইট শুড বি স্টপড। ওয়াই? বিকজ উই আর দ্য কিপার অফ দ্য মেডিসিন, উই আর দ্য কাস্টোডিয়ান অফ দ্য মেডিসিন। সো আমরা এত পড়াশোনা করছি, আমরা এত সেমিনার অ্যাটেন্ড করছি, সো ওয়্যার ইজ দ্য আউটকামস অ্যান্ড ওয়্যার ইজ দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন? আমরা আমার বাড়িতেই করি না। মাল্টিপল ড্রাগস, একটা ব্যথার ওষুধ দিয়েছে ন্যাপ্রক্সিন, তার সাথে দেখা গেল আরেকটা দেওয়া হচ্ছে কোনো প্যারাসিটামল 650। আমি জানি প্যারাসিটামলের 650-তে তার কী ফাংশনস আছে, আমি জানি ন্যাপ্রক্সিনের কী ফাংশনস আছে, আমি জানি NSAIDর কী ফাংশনস আছে। আমাকে নিজেকে চেঞ্জেস করতে হবে। তো আমার এইটুকুই বলার কাজ। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলের তরফ থেকে বেশ কিছু সার্টিফিকেট কোর্স ইনিশিয়েট করছি। আফটার কমপ্লিশন অফ ডিপ্লোমা, B.Pharm আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, যাতে আপনারা সেগুলোকে সার্টিফিকেটগুলো করতে পারেন। বিপ্লব স্যারকে দেখে আমার মনে পড়লো, উনি জাস্ট ঢুকলেন, লেট হয়ে গেছে ওনার। তো সেই জায়গাতে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, সজল স্যারের সাথে অনেক দিন রাতের পর রাত কথা হয়েছে, বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটু পজিটিভ থিঙ্কিং হওয়া দরকার, যে আমি B.Pharm পাস করেছি বা M.Pharm পাস করেছি বা আমি এটা করেছি। কিছু এন্টারপ্রেনারশিপ এগিয়ে আসুক, কিছু ব্যবসা করুক লোকে, কিছু ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিজেরা করুন, গভর্নমেন্টের কাছে প্রজেক্ট সাবমিট করুন যে আমাদের কেমিক্যাল হাব হবে না কেন। দেয়ার সো মেনি অর্গানাইজেস অ্যান্ড সো মেনি ম্যানেজমেন্ট যাদের অনেক টাকা আছে। সমিত স্যারকে আমি চিনি বাই পার্সোনালি, যার এটা অ্যাডামাস। কোনো এক সময় আমার মানে সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার সাথে কথা বলার, উনি খুব ভালো এন্টারপ্রেনিয়র আমি জানি। তো এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের মধ্যেও তৈরি হওয়া উচিত, যে আমরা নিজস্ব একটা কিছু করব, আমরা নিজস্ব একটা দিক গভর্নমেন্টের কাছে তুলে ধরব। যে আজকে হাসপাতালগুলো, আজকে যদি প্রাইভেট হাসপাতালে যাই, দেখবো একটা ফার্মাসি লাস্টের দিকে হয় ফার্স্টের দিকে পড়ে আছে, দুটো ফার্মাসিস্ট আছে, আর দ্যাটস অল। হেলথ কেয়ারের কোনো রোল নেই, যা আছে ডাক্তার, নার্স। কেন? এটা কেন হবে? তাহলে আজকে যখন ICCUতে কোনো পেশেন্ট ভর্তি হলো, তার ড্রাগ ডোজ ক্যালকুলেশনের জন্য কে আসছে? না অ্যানেস্থেসিস্ট আসছে। কে আসছে? অ্যানেস্থেশিয়ার কোনো এক্সপার্ট আসছে বা কোনো ক্লিনিক্যাল ICCU এক্সপার্ট আসছে। তাহলে ফার্মাসিস্ট কোথায় গেল? এক্সক্রিটেরি টাইম ক্যালকুলেশন করে ড্রাগ ডোজ
কে তৈরি করতে পারে? ড্রাগ ডোজ ভালো করে কে ইভ্যালুয়েট করতে পারে? ফার্মাসিস্ট। তাহলে এটা কে জানে না? আমরা সবাই জানি। কোথায় ইমপ্লিমেন্টেশন হলো না? গভর্নমেন্টের কাছে বললাম না কেন যে একটা প্রত্যেকটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে একটা করে ফার্মাসিস্ট থাকবে, স্পেশালাইজ ফার্মাসিস্ট থাকবে, থাকলো না? তাহলে আজকে দেখা গেল একটা পেশেন্ট তার কোনো রকমের অ্যাসপিরেশন হচ্ছে, সে অ্যাসপিরেট করছে, সে সময় তাকে ইন্টিবেট করা যায় না। তাহলে তাকে তৎসত্ত্বেও কী করছে? যারা হাসপাতালে আরএমও আছে, নার্সিংহোমে আরএমও আছে, হয় তারা হোমিওপ্যাথি থেকে আছে বা আয়ুর্বেদিক থেকে আছে। আমার দুর্ভাগ্য, আমাদের ডিএমই স্যার ছিলেন, উনি চলে গেছেন। তো এখানে আরএমও কোথা থেকে আসছে? হয় হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদিক। তা সেখানে ফার্মাসিস্ট নেই কেন? একটা ফার্মাসিস্ট থাকলেও তো সে ড্রাগ ডোজ ক্যালকুলেশন করতে পারত। তো এই ধরনের জিনিসগুলো আছে, আমরা লড়াই করছি। হয়তো অনেক কিছুর প্রতিবন্ধকতা আছে, আমাদের অনেক কিছু ল্যাপসেস আছে। তবু একটা জিনিস অনুরোধ করব, যারা স্টুডেন্ট আছো তারা সত্যি এমন একটা প্রফেশনে এসছো, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হতো যে ফার্মেসি প্রফেশনে এসছি কিচ্ছু হবে না, দূর ফালতু প্রফেশন। কিন্তু এখন ফিল হয়, যখন আমি এলএমসিপি আহমেদাবাদ, আমি গুজরাটে বেশ কিছুদিন চাকরি করেছি, আমি যখন দেখেছি তারা বিদেশে কোথায় ইনভলভ, আমার যারা কলিগ ছিল সারাভাইতে বা এলএমবিকে, আমি যখন দেখি তারা ছবি দেয় ফেসবুকে, মানে ইউএসের কোনো একটা এত সুন্দর জায়গা যেখানে তারা ঘর করেছে, বাড়ি করেছে, ফ্যামিলি নিয়ে বাস করছে, কেউ হয়তো সুইজারল্যান্ডে আছে, তো দি আর স্টাবলিশড। আজকে ফার্মাসি করে কিন্তু তারা কিন্তু প্রথম দিকে চলে গেছে। আর আজকে আমরা ফার্মাসি করে হয় ওষুধের দোকান, নয় অন্য কোথাও, নয় বাইরে, এসব করতে হচ্ছে। এগুলো চেঞ্জেস করতে হবে, সবাই মিলে না আসলে পারবো না। তবুও আমি বলবো চেঞ্জেস হবে, পিসিআই করেছে, আমরাও চেষ্টা করব। সো থ্যাঙ্কস আ লট ফর লিসেনিং মি। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল আমি তোমাদের একটা কথাই বলবো, স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল থেকে যদি কোনো সমস্যা হয় কমিউনিকেট করবেন, আমরা নিশ্চয়ই হেল্প করব। রিসেন্টলি একটা সমস্যা হয়েছিল, আমরা হেল্প করেছি, আগামী দিনেও করব। থ্যাংক ইউ। हेलो, Thank you, sir. एक्सक्यूज मी, जस्ट ए मिनट। देखो सर वाइस चांसलर भी हैं और हमारे पूरी टीम भी है। बच्चे लोग, क्या होता है कि हम लोग भाषण दे के चले जाते हैं और आप लोग सोचते हैं मेरा मन की बात मन में रह गई। तो वाई आई रिक्वेस्ट वाइस चांसलर टू अलाउ अस फॉर 5 minutes फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद द स्टूडेंट्स। राइट, आप लोग यहाँ से माइक्रोफोन ले जाओ और स्टूडेंट्स को दे दो प्लीज़। सारे माइक्रोफोन्स को ले जाओ और 5 मिनट में आपकी जितनी भी क्वेरी हैं, यहाँ दोनों सीसी मेंबर्स हैं, आपके ईसी मेंबर हैं, सीसी मेंबर्स हैं, कॉलेज छोड़ के। अगर कॉलेज का कोई भी प्रश्न होगा तो इंटरटेन नहीं होगा, ठीक है? कॉलेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा वो आपकी इंटरटेन, इवन टीचर्स ऑल्सो, इफ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग पीसीआई, सिलेबस और एनीथिंग, यू कैन आस्क टू अस, बिकॉज दिस इज द टाइम। आपको समय नहीं मिलेगा बाद में मेरे को पूछने के लिए, चाहे सर को पूछने के लिए, चाहे आपके प्रोफेसर साहब को। तो बिजी सर तो बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास सारे कॉलेजेस, सारे मतलब डिपार्टमेंट्स का रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी है, उससे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता हूं, और हमारे सर जॉब करिकुलम में आ रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट वन विलेज लाइक दैट। उस विलेज में क्या होगा, आप अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से भेजेंगे, वो पूरे डाटा बनाएंगे एक विलेज का, कौन कौन क्या आदमी मरीज मेडिसिन खा रहा है, क्या खाना खा रहा है, वो प्रोजेक्ट टाइप का बनेगा और वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। और वो गवर्नमेंट का मिशन भी है, मोदी मिशन भी है, कि आप लोग, हर एक कॉलेज वाले लोग एक विलेज नियर बाई अडॉप्ट करेंगे। उसमें क्या ना, उनका पूरा हेल्थ चेकअप का आपके पास जिम्मा रहेगा, वो क्या दवाई खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। वो ट्यूबरक्लोसिस जैसे भी चल रहा है ना, इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो वो ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ दवाई खाने से नहीं होता, उनका फूडिंग कराने से भी होता है। उनको 500 रुपीज़ गवर्नमेंट देती है, बट उनके मिलता है कि नहीं मिलता है, ये पूरा चार्ट आप बनाएंगे। ये मेडिसिन खा रहे हैं तो कौन सा मेडिसिन खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, कौन दे रहा है। ये मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप नियर बाई एक हमारे उसमें पीसीआई में भी आ रहा है और गवर्नमेंट का भी मिशन है
कि एक आप लोग एक गांव को अडॉप्ट करें और गांव के आदमी लोगों का पूरा डाटा तैयार करें। अभी सर क्या होता था ना सर ने बताया ना कि आप अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बताओ कि यस आई एम फार्मासिस्ट, आई एम एलिजिबल टू नो ऑल दिस थिंग। और वो बोल रहे थे ना एमओ आरएमओ जानता है, वो मेरी मेडिसिन के बारे में वो बताता, क्यों नहीं बताएगा? आप वो चीज़ खो दिए हो ना, वो चीज़ बताते नहीं हो कि मेरे पास इतना नॉलेज है। ये तो बोलो कोविड आया तब आप और हमारे का जान पहचान हुई कि व्हाट इज फार्मासिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, व्हाट फार्मासिस्ट कैन डू, राइट है? बच्चे लोग यार तुम लोग क्लासरूम में नहीं हो, लगता थोड़ा बाहर हो, या तो हमारी भाषा नहीं समझ रहे हो, बंगाली में समझाए वो भी नहीं समझे, अब वो हिंदी में समझा रहा वो भी नहीं समझोगे, अंग्रेजी में समझा रहा वो भी नहीं समझोगे। ये आपके पास इमीडिएट टाइम है, बस 5 मिनट्स आई एम गिविंग टू यू, राइट? इफ you have any doubt, our Devashish sir is there and he has given a lot of things जो आपको मार्केट के लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दिया है। तो he will tell you, even Sajal sir, most of the teachers are there, he can guide you. Just start. This is basically for my colleagues from PCI and West Bengal Pharmacy Council. We have actually adopted 5 villages, not one, but 5 villages all around the university. And community service department, and this is for my students. I am sure many of you know about it. Many of you must be going along with community service teams to serve those communities in the villages. So what PCI sir has now told you, along with serving the community in other ways, you also try to serve the community in the profession that you are in. So when you go to the villages next time, and I would rather request my colleague Dr. Sajal Jha to ensure that all the first year students, when they do their community service, try to do what he is trying to impress upon you. Take a record of all the villagers, at least in one village, if not 5. And if together you can do for all the 5, that would be nice. And take a record of what are the medicines they are taking, what dose, whether the drug deliveries are according to the prescribed norms or not, who is prescribing them, who is trying to monitor those, and also try to map those villages as far as the disease hubs are concerned. I think that's an additional task that you have to do. So thank you very much for this suggestion. We will definitely do that. We are already on the job, so it won't be very difficult. Thank you. Now it's open house for you. Sir, may I have a discussion? You are in the faculty ना? Yes, sir. आपसे मैं चाय पीऊंगा ना, पहले Sure, बच्चे sir. को दो, पिलाओ चाय। बच्चे के पास कोई डाउट्स नहीं है? देखो अब तो आपके प्रिंसिपल भी बोल दिया, अब तो पूछ ही लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मार्क्स कम हो जाएगा, 5 नंबर कम हो जाएगा तुम्हारा। Good afternoon, everyone. My name is Srinjoy Ghosh and I belong from first semester BPharm. So my question is, what is the topmost position that I can reach after completing MBA? Actually, I don't know what to do after MBA. After BPharm, I will do MBA. That is my desire. And after that, what shall I do? And what are the topmost positions that I can reach? All these things I want to know, sir. Now, after completion of MBA, there are many streams in MBA. There are many streams in MBA. There are many specializations in MBA. Which one you will prefer, and it will fit for the after your pharmacy profession. That depends on. It could be inventory, it could be HR, it could be many more things. But I will suggest there are some courses which is having in the Maharashtra, in other part of the country, regarding the law courses in regulatory affairs. It will be much more fit with this profession. Definitely we will go for MBA. We have also done MBA. But it will help you in running any industry or management. First of all, you have to go you have to acquire the experiences. So before acquiring the experiences,
you cannot acquire the big position. So think step by step. It will be help you. I think sir will give you some inputs. Like BPharm MBA, the combination is the second most preferable what you call qualification in our country. So you can join as a PMT. So PMT is a segment in marketing where you can join, and like specialization as mentioned, and our honorable vice chancellor actually he's from IIM, so I'll ask him to again add something or give some input, sir, please. Just to be very direct to your question, you can actually be the CEO of a pharmacy company. That's the limit that you can go. And not only in India, but you can also be a global head. The way the supply chains are now integrating itself with India, today the whole world is at your disposal. So you can reach up to the level of a CEO of a pharmacy company or a drug company. You can also be the head of research if you want to devote yourself into research. As he suggested, you can also be heading companies in their legal cell. Today, the combination of pharmacy and law and management is a deadly combination. 3 combinations: law, your domain of pharmacy, and management. I think that combination no one can beat. So look forward to much, much better, greener and golden future. Thank you. Hello. Thank you, sir. And one more question I would like to ask. Is there any kind of government job after doing MBA? That I think sir would be able to. आफ्टर MBA? Yes, sir. यार हम तो फार्मेसी वाले आदमी हैं, हम तो आपको फार्मेसी बता सकते हैं कि बहुत जॉब है. अब ये मैं बताता हूँ, देखो बैठ जा, मैं बता रहा हूँ फार्मेसी. नहीं बैठो, सुन लो. फार्मेसी करने के बाद आपका जो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आप कहीं भी जा सकते हो. आप IPS भी बन सकते हो हमारी पढ़ाई के बाद. आपको मालूम है कि नहीं? फार्मेसी के बाद आप ग्रेजुएट हो गए ना, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से आप कहीं भी जा सकते हो, है ना. UPSC करो, आप अपनी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आ जाओ, आपके पास जॉब ही जॉब है. लेकिन कोई कॉमर्स वाला लड़का आपका जगह नहीं ले सकता. BCom किया हुआ, चाहे MBA किया हुआ, आपका जॉब नहीं ले सकता. लेकिन आप उसका जॉब ले सकते हो. आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली पढ़ाई है. कहीं भी घुस जाओ, किसी भी क्षेत्र में घुस जाओ, उसकी नागरिकता प्राप्त कर लो. ठीक है. ये सर कुछ बोल रहे थे. नहीं, वो जो बोल रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA इज देयर एनी गवर्नमेंट जॉब और नॉट. In pharmacy profession, I don't think so, but in healthcare and hospital management, there is a government job. Assistant super, there is a post called assistant super. Assistant super and up to deputy super you can reach. There is a job. बच्चे, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, फार्मेसी के बाद MBA क्यों करना चाहते हो? यही बता दे तू मुझे. बता बेटा. Sir, what I know that I want to share. नहीं, आप क्यों करना चाहते हो? Yes, वो भी sir, तो that होगा ना. only. Actually, I don't want to be professor. That's why I will not do masters. तो क्या बनना चाहते हो? I बताओ. want to get a good. I want to be engaged in good profession, like in industry. So for that reason. No, sir, it's a very difficult job. Much difficult job. This is an honor to all your teachers also. It's a difficult job to give a study. Much Very difficult. good. Thank you. Can we take another question? Yes, go ahead. 5 minutes are there. जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो. Good morning, sir. I'm Raushan Fatima from BPharm 7th Sem. So my question is, हमारे 7th Sem में एक subject है NDDS, Novel Drug Delivery System. That is very crucial for nowadays because everyone is focusing on NDDS. तो ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना वो बहुत ह्यूज है और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों को एक सेमेस्टर में ख़त्म करना पड़ रहा है, मतलब 7 सेम में. तो अगर ये सब्जेक्ट को थोड़ा नहीं, कंटिन्यू. लेट हिम कंटिन्यू. लेट हर कंटिन्यू. सॉरी. आप बिंदास होके बोलो. आपकी सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, आपका ERC भी सुन रहा मेरे जरिए, मतलब एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमारा चेयरमैन है वो भी सुन रहा मेरे जरिए. आपकी हर एक बात को मैं वहाँ पहुँचा दूंगा. बोलिए. तो सर ये जो NDDS सब्जेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो
एक सेमेस्टर में ये ख़त्म करना बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, मतलब इसका सिलेबस या फिर सेमेस्टर अगर आप एक्सटेंड कर सकते तो बहुत अच्छा होता। आपकी बात को मैं पिकअप कर लिया फातिमा जी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नेक्स्ट कमिंग एजुकेशन रेगुलेशंस में उसको डिवाइडेड कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। ये मैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है फातिमा जी कि आप हमारे मेल आईडी में, मतलब जो ERC का मेल आईडी है, उसमें ये चीज़ लिख के भेज दें, ठीक है। और अपने कॉलेज का नाम जरूर लिखना, है ना, और लिखना उस दिन की इंटरेक्शंस हुआ था, देवासी सर और मैं भी था और सर लोग थे। और आई एश्योर नेक्स्ट वाले में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी काम चल रही है। हम लोग भी जानते हैं कि थोड़ा से वास्ट है और इसको थोड़ा से इसको और देना है, ठीक है। हो सकता है ये सेकेंड ईयर से ही चालू हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हम लोग भी समझे थे, देवासी सर का भी ये भेजा गया है कि भाई इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। कुछ कॉलेज वाले लोग भी लिखे हैं, तो आपकी बात एकदम जेन्युइन है, बट लेटर जरूर लिख देना मुझे, ठीक है। थैंक यू फातिमा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन। Good afternoon, everyone. I am Shinchini Mandal. I am third year student. सर मुझे कुछ वही एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में पूछना था। सर हम लोग अगर फर्स्ट ईयर, मतलब हम लोग का फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम लोग एग्ज़िट एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें हम पास नहीं हो पाए, क्या हम उसके बाद वाला साल भी दे सकते हैं एग्ज़ाम? अटेम्प्ट्स के लिए आप जब तक पास नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम देते रहना, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि एडएमएस के कोई भी बच्चे फेल नहीं होंगे। मुझे मालूम है, इसीलिए आप डरो मत। आप तो बी फार्म कर रहे हो ना, अभी आपके पता आया नहीं, क्यों डर रहे हो? मैं तो डरा रहा था। बच्चे जैसे माँ डराते हैं ना, बेटा नहीं खाना खाओगे तो बगल वाला कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, खा के निकल जाएगा, तो मैं भी डराता हूँ, पढ़ाने के लिए डराता हूँ। गलती तो नहीं किया ना। तो आप एश्योर्ड रहो कि आपकी जो यहाँ पढ़ाई है ना, ये इतनी अच्छी पढ़ाई है एडएमएस का कि आपको लगेगा कि ये बेकार एडमिशन, ये एग्जिट एग्जाम ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये बेकार ले रहा है, ये तो मैं 1 घंटे में देख के निकल जाऊंगी, आई एश्योर। और मैं जानता हूँ आपकी पढ़ाई को, इसलिए बंगाल के बच्चे लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास होके एग्जाम देना। अभी फॉर्म में तो आया ही नहीं, अभी डिप्लोमा में इसलिए लाया, ये चेक पॉइंट लाया था। बहुत सा फर्जी कॉलेज खुल गया था ना, बहुत सा फर्जी कॉलेज खुल गया, नॉट अटेंडिंग जिसको बोलता आप लोग। देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, मुझे कोई हाइड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे कॉलेज सस्टेन करने के लिए हम लोगों ने ये लाया है। अच्छे बच्चे की भीड़ में अब क्या करूँ सर, 70 साल का बुढ़ा भी पढ़ता है आपके साथ, स्टूडेंट वो भी है, आप भी हो, तो वो भी पास करके बेरोजगार होगा, आप भी पास करके बेरोजगार होगा। वो भी ममता दीदी को बोलेगा मुझे मेरी चाकरी पाई ना, या हमारा के चाकरी दो, तो वो बेचारी वो भी सोचेंगे, सीएम भी। तो हम अपने स्टेक को बचाने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन बी फार्म अभी आप लोग चिंता नहीं करो, आप लोग पास हो जाओगे, टीचर बन जाओगे, तब मैं आपके लिए एग्जिट एग्जाम लगाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ये देखो तुम्हारा जो सीसी मेंबर ना भागने के लिए जा रहा है, भागने मत देना, दरवाजा बंद कर देना। ये भागते हैं हर समय, हर समय भागते हैं। आज इनको कितना मुश्किल से सजलदा ने बुलाया सर का नाम देके, तब आए हैं। हमारे नाम से तो भागते हैं, इनको भागने मत देना। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इनसे जो भी क्वेश्चन है पूछो, बाद में यही आपके आएंगे काउंसिल में, जो इतना बोले हैं ना, यही आएंगे तो एग्जिट एग्जाम पास करके आया कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स लाया कि नहीं, है ना, तुम्हारा वेरिफिकेशन खोल ले कि ना, यही हिसाब करेंगे, है ना। तो लेकिन इज़ वेरी पोलाइट, हम्बल। अगर आपको देखो, इन्होंने पहली बार किसी कॉलेज में जाके बोला है कि आपको कोई भी क्वेरी हो डायरेक्टली इनसे बात करो, ये पहली बार आया है। आई मस्ट थैंक्स टू हिम ऑल्सो, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज़ अटेंडेड एनी इंस्टीट्यूट, मतलब मेरे साथ। तो ये भी इनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और ये इतिहास में पहली बार होगा कि बंगाल का सीसी मेंबर और ऑल इंडिया का ईसी मेंबर एक साथ मिलकर सत्यानाश कर रहा है किसी कॉलेज के लिए। चलो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो हम भी चाय पियेंगे। बेटा तू तो गाना बहुत अच्छा बजा रहा था,
बजा बजा। গুড মর্নিং স্যার। স্যার দেবাশিস স্যার সে কোয়েশ্চেন है স্যার, আপনি যেরকম বললেন যে আপনি যখন হসপিটালে ছিলেন তো আপনি যে প্রবলেমটা ফেস করেছিলেন রিগার্ডিং H1 ড্রাগস, তো আমরা যদি কেউ ওরকম প্রবলেম ফেস করি তো এরকম কোনো লিগাল সাপোর্ট কি আমরা পাবো তার জন্য? অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলের পার্ট থেকে একটা সেল তৈরি করার জন্য আমরা অলরেডি ইনিশিয়েট করেছি। সেই সেলটা হয়তো নেক্সট কামিং যে ফুল কমিটি আসবে, যেহেতু ফুল কমিটি ছিল না ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলের কাছে, যে কোনো ডিসিশন ফুল কমিটি না হলে নেওয়া যায় না। তো আমরা এটা রেখেছি যে কোনো গ্রিভান্সেস যাতে রিড্রেসাল হয় সেটার জন্য একটা সেল থাকছে, এবং সেই সেলের ডেডিকেটেড ডিগনিটারিজরা থাকবেন, তারা নিগোশিয়েট করবেন গভর্নমেন্টের সাথে, যেটা খুব জরুরি ছিল, হয়নি এতদিন, আছে, সেটা হচ্ছে হওয়ার টাইম। এই জন্যই বলছি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি কাউন্সিলের 2010-এর সিনারিও যদি দেখি, যারা লায়ন্স রেঞ্জে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছে, তোমরা সেটা হয়তো করনি, হয়তো সেখানে পায়রা হেগে দিত মাথার উপরে, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে কিছুটা ভালো জায়গায় এসছে, আপগ্রেড হচ্ছে। আমরা আপগ্রেডেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামও করেছি, মোটামুটি 55,000 আপগ্রেডেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা কন্ডাক্ট করেছি, সব অনলাইনটা করেছি। তো এটাও আছে, কারণ এটা আমি এই কারণেই বলেছি, সত্যি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা নেই, আমি নিজে কাজ করতে গিয়ে ফেস করেছি। এবার ধরো তোমার মেডিকেল সুপার, সে তোমার কথা শুনবে না। তুমি যদি কোনো পলিটিক্যাল পার্সন হও, কোনো অ্যাসোসিয়েশনের ছেলে হও, হয়তো তোমাকে ঘাঁটবে না। সবাই তো আর পলিটিক্যাল পার্সন বা অ্যাসোসিয়েশনের ছেলে হতে পারে না, তো তাদের ক্ষেত্রে সত্যি সমস্যা। তো এই জন্য সেটা মাথায় রেখে আমরা করেছি, ডেফিনেটলি হবে। স্যার আই হ্যাভ ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন স্যার। स्टेट काउंसिल से कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तुम मदद ले सकते हो। फार्माकोविजिलेंस जानते हो बेटा, उसका वेबसाइट एनी टाइम खुला रहता है, डाल दो, एक रिपोर्ट डाल दो, फिर देखो मज़ा, ठीक है? एक रिपोर्ट डाल दो, ये इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा और ये वायलेशन ऑफ दिस वन कर रहा, फिर उसकी मज़ा देखो, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन आपका एप्लीकेशन जो है वो डालने के लिए आपका नाम होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फुल एड्रेस के साथ। नहीं तो गवर्नमेंट का एक एक्ट आया हुआ है सर कि अगर आपका नाम आइडेंटिफिकेशन आप छुपा रहे हैं तो उसका वो एंटरटेन नहीं करेंगे, मेलाफाइड इंटेंशंस, राइट है ना? और सेकंड क्वेश्चन आप पूछ लो बेटा। सर क्वेश्चन एक सजेशन बोल सकते हैं सर। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी को बाहर से भी आना पड़ता है सॉल्डिंग में। तो अगर बहुत सारे और भी जगह पे बैठ जाओ, मैं समझ गया। मैं बोलता हूँ, आप बैठ जाओ, मैं बोलता हूँ, सर को नहीं बोलने देता हूँ। वेरी शॉर्टली इन्होंने हमारे साथ एक करार किया है कि बहुत जल्दी ये लोग ऑनलाइन सिस्टम लाने जा रहे हैं। ऑनलाइन है, बट देखिए क्या ना, इतनी पॉलिटिकली ये चलता है यहाँ पे आपके बंगाल में, नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इन्होंने एक हम सबों को विश्वास दिलाया है कि देवाशीष दा कि जब तक मैं ये वाला काम नहीं कर लूँगा मैं बैठूँगा नहीं। ये बहुत जल्दी आप लोगों को रिफॉर्म मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं सर के मुंह से नहीं, मैं अपने मुंह से बोलना चाह रहा हूँ कि ये पीसीआई का भी दायित्व है और सर का भी है कि बच्चे लोगों की परेशानी को झेलने का, मतलब ये भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे लोग आके रात को बैठे वहाँ पे और खड़ा रहें। मैंने खुद देखा है, मैं जब गया था तो देवाशीष दा अंदर बैठे हुए थे और लड़के लोग भीड़ लगाते, इन्होंने खुद अपने से जो एप्लीकेशन है आपका उन्होंने ले लिया, बोला इसका जल्दी कर दो। तो ये देखिए ना अप्रोच आपका कैसा है उसके चलते। सर ने बोला ना हर आदमी पॉलिटिकली नहीं मोटिवेट कर सकता, वहाँ जाके झगड़ नहीं सकता है, बट वेरी शॉर्टली आप लोगों को मिलेगा वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से, राइट ना सर? वेरी शॉर्टली, है ना? और जो भी दिक्कत हो रही है बच्चे लोगों को वो मेरे ख्याल से आप लोग पास आउट हो गए तो नहीं होंगे, ठीक है? ओके, और कोई सर किताब लेके आए हैं सर पूछने के लिए? चलो कोई बात नहीं। Good afternoon, sir. My name is Sumi Irene. I am a BPharm second year student. Sir, in our curriculum, we have industrial training, which is compulsory, but hospital training is not compulsory. It is more like a suggestion, like why is it not a compulsion? Because I think that exposure to hospital training should also be given to us. It is equally important. बेटे इनके लिए ताली बजा दो। बजाया? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी मतलब बुलंद है कि आप गिर जाओगे, ठीक है ना? तो ये मैं चाहता हूँ कि
सर बताओगे? बताओ ना। ये बता रहा हूँ सर कि वेरी जल्दी हम लोगों ने दोनों कर दिया है ना। आपका डिप्लोमा वाले बच्चे लोग भी हॉस्पिटल वहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, और इंडस्ट्री वाले जो B.Pharm स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोऑप्ट करने के लिए बोल दिया है, और वो हो गया भी है। आप अभी नया वाला सिलेबस देख लो, उसमें हमने कर दिया है। इधर का चॉइस है आपका, तो ये आप दोनों भी कर सकते हो, है ना, दोनों भी कर सकते हो, ये आपके लिए है, ये मैं बता देता हूँ। और मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, वो भी इसको इम्प्लीमेंट करा सकती है। और ये एक तो मैंने बोला ना, गांव विलेज वाला प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये आपकी सजेशन हम लोग ने पिछले बार यहाँ किसी बच्चे ने बोला था, उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया। एडमस से ही ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम व्हेन वी केम हियर कि सर हम लोगों को भी ये मौका मिले, तो हम लोगों ने डाला था ये, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you not to me, thank you to your president of PCI, those who has done this, implemented this, Montu Bhai Patel, right? Okay. Any more question? और चलूँ, क्योंकि सर देखो BC सर का भी टाइम है, शेड्यूल्ड है, और भी गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं अब सीधे फैकल्टीज का कोई क्वेश्चन था ना सर, आपका कोई क्वेश्चन था ना, पैसा बढ़ाने का कुछ क्वेश्चन था? नहीं सर, चलो पैसा ठीक ठाक मिलता है सर, मैं बोलता हूँ। तो क्या नहीं मिलता बताओ? कुछ वैसा कुछ नहीं सर, वो भी एक सजेशन है मेरे पास से। सो जस्ट लाइक रोशन सेड कुछ देर पहले, so the point here what I would like to say is that the chemistry syllabus, for example, I teach chemistry, for example the analytical chemistry is in the first semester and the instrumental analysis in the 7th semester. So that gap is so huge that they cannot actually fathom or recall all those subjects back. It's a difficult thing. The second important thing what I would like to say is that, for example, biochemistry, it's such an important thing for drug designing and medicinal chemistry, especially the protein and the enzyme part. So that thing, if that could have been extended to 2 semesters, the main reason why I'm saying here is that in the 4th semester, the students generally study the medicinal chemistry, the organic chemistry 3, and pharmacology, 3 of the major important subjects for the future. On the other hand, in the 3rd semester, the syllabus load is extremely low. Again, in the 2nd semester, previously, the biochemistry which is required, that is very short, which I want to say. So that is why if this 3 semester can be equalized properly, then I think that's a suggestion from my side. आप बताओ कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं? For example, sir, if we can actually introduce something about the protein and the enzyme in a later part, for example, and later part, and if we can actually introduce the medicinal chemistry 3, which actually contains heterocyclic chemistry and stereochemistry. If we can introduce stereochemistry in the previous semester, that is in the 3rd semester, which has a very low load, like what I could even it's not even being a 4-credit course. It only has aromatics. Only has aromatics and थैंक यू, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। आई विल रिक्वेस्ट यू, नॉट आस्क यू बट रिक्वेस्ट यू, आप अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू एक लेटर मेल कर दो हमें, यूनिवर्सिटी के थ्रू, नॉट ऑन द, आई थिंक आपका सजेशन, योर नेम, सजल सर नेम, यूनिवर्सिटी का सर का नाम एक डाल दो, और मंटू सर का, सर प्रेसिडेंट सर का आपके पास है ना मेल आईडी? हाँ, मेल आईडी है, और हमारे ERC चेयरमैन दीपेंद्र सर हैं, उनको भी मेल एक CC कर दो, ठीक है। वेरी शॉर्टली, गुड सजेशन। मैं आपको, मेरे साथ वो मिल रहे हैं 26 को, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट दिस वन, क्योंकि मेरा वो साइड नहीं है, वो ERC का पार्ट है, तो मैं आपकी बात को अगर मेल कर दे रहे हैं आज, तो वो हमें मेल कल शाम तक मिल जाएंगे। ऑन 26th वी आर सिटिंग ऑल टुगेदर, तो डेफिनेटली आपकी बात जो कि मुझे जेन्युइन लगी है, वो एडमस यूनिवर्सिटी को थैंक्स लेटर जरूर भेजेंगे। थैंक यू। ओके, इसमें जस्ट मेरा एक एडिशन है, जैसे हमारा एक पेपर है बायोफार्मास्यूटिक्स, जो हम जब भी हैं थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल भी किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल PCI हटा दिया न्यू सिलेबस में, जिसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम लोग AUC फार्माकोकाइनेटिक्स जो भी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो अगर आप बोलिए तो उसमें पॉइंट ऐड करके बायोफार्मास्यूटिक्स में प्रैक्टिकल होना चाहिए, एसेंशियल पार्ट। बुरा नहीं मानना, PCI सिर्फ चला रहा है फैकल्टी वाले, टीचर्स लोग चला रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमें मालूम ही नहीं कि हम कौन है,
हम कस्टोडियन है क्या है, कुछ नहीं। रेगुलेशन पार्ट टीचर्स को होता है हर समय। टीचर्स अगर अच्छे सजेशन देते हैं, पीसीआई इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, हम लोग जितने यहाँ दोनों बैठे हुए हैं, आपको लिए हम लोग काम करते हैं, आपका इंस्पेक्शन लगवाते हैं, आपकी ड्यूटी लगवाते हैं, कॉलेज लोगों को डांटते हैं, और डांटते हम नहीं हैं, डांटते हैं आप हैं, मुंह हमारी रहती है। आप इंस्पेक्शन करके लिखते हैं कि ये कॉलेज सही नहीं है, हम उसको पेपर में पब्लिश कर देते हैं। ये करते हैं टीचर्स लोग करते हैं, सिर्फ हम लोग गाली सुनने के लिए बैठे रहते हैं पीसीए वाले। ठीक है, आप पहला साल में लिखते हैं कि ये क्लासेस नहीं होने चाहिए, पीसीआई हटा दिया। फिर लिखते हैं नहीं ये क्लासेस होना चाहिए, पीसीआई फिर जोड़ दिया, है ना। तो हम लोग तो समझ में नहीं आता कि हम लोग काम किसके लिए करते हैं। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ सिर्फ इंस्पेक्शन ही लगा रहा हूँ, कॉलेज ही की बात कर रहा हूँ, हमने कभी भी रेगुलेशंस के बारे में नहीं बात किया। एंड दिस इज द राइट टाइम व्हाट यू हैव चूजन इट, है ना। क्योंकि आप मेल करवाओ, जो सर ने भी बैठ के मेल कराइए। और ये आपका जैसे फर्स्ट पॉइंट जो वो लड़की ने बोला था ना, वो हाँ, तो वो भी ऐड करवा दूँ। तो आई थिंक फातिमा जी थी, तो मैं उनका भी पॉइंट्स को ये कर लूँगा। थैंक यू। और मैं इस दिन नहीं, सर का भी बिजी टाइम है, मेरे ख्याल से ऑफ करूँ, मैडम भी खड़े खड़े थक गई होगी। तो मैं आपको दो ही चीज़ पूछूंगा अब, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो गया। फैकल्टीज कौन कौन है यहाँ पे? फैकल्टीज है ना, ठीक है। ये एडमएस के ना, ऑनेस्टली वर्किंग ना। कितने आदमी पूछा मुझे कि इंस्पेक्शन लगा दो? कितने आदमी ने मेल लग किया होगा, अप्रोच किया होगा? कितने आदमी? आप लोगों ने नहीं किया? आप लोगों का 10 ईयर्स पार नहीं हुआ? हो गया? अरे लिखो, 10 साल हो गया तो आप चले जाओ, इंस्पेक्शन करो, कुछ माल उल कमाओ, ठीक है, कुछ माल उल कमाओ, घर और बिल्डिंग विल्डिंग बनाओ। नहीं बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे हमारे पास ये लोग आएंगे, स्टेक होल्डर लोग, कि सर एटा भालो अच्छे ना। लिखो, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग बनते हैं ना, देखो सर के साथ चेयर में भी बैठे हुए थे, तो याद होगा एक महानुभाव का फोन आया, हमारे भी बॉस थे वो, सर हमारा 5 लड़कों का इंस्पेक्शन नहीं लगा, आज इनका बुक्स भी ऑलरेडी दे आर इंस्पेक्टर। तो ये आजकल टीचर्स क्या हो गए ना, ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं जो करिकुलम की बात करते हैं जेन्युइन्स के लिए। आजकल टीचर्स, हमारे फ़ोन सुबह से बजता है कि इंस्पेक्शन नहीं लगा सर, तो मुझे नहीं मालूम क्यों वाई दे आर इंटरेस्टेड इन इंस्पेक्शन। तो हम लोग डेप्थ में गया, पता चला पर कॉलेज आसबार जाबार फ्री और कॉलेज का, है ना। तो हमें लगा कि भाई ये तो भविष्य अच्छा बना रहे हैं। तो फिर हम लोग डंडा चलाया इंस्पेक्टर्स को, फिर उन लोग मंत्रालय को लिखा ये सारे ईसी और सीसी मेंबर को भगा दो। बोला क्यों भाई, हमें चोरी नहीं करने दे रहे हैं। तो वो हमें, आपको मालूम है कि नहीं, हम लोग सेंट्रलाइज, हमारे पास विजिलेंस चेकिंग हुआ। हाँ, तो हमारे सर विजिलेंस चेकिंग हुआ, हमसे पूछा गया व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम बोले सर विच टाइप ऑफ थिंग्स? बोले इंस्पेक्टर्स को बहाल नहीं कर रहे हो। तो हम बोले सर कुछ हमें देता नहीं। तो बोले व्हाट इज दिस? हम लोग वहाँ से लेता है, यहाँ नहीं देता ना, तो वो तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए ना सर, तो इसीलिए नहीं लगाते हैं। तो बोला समझा नहीं, हम लोग सब समझते हैं, आप भी बैठे उसी काम के लिए, है ना। तो इंस्पेक्टर बेचारा परेशान हो गया, अब हम लोगों को भगाने के लिए रेडी था, लेटर उटर लिख दिया कि इसको भगाओ यहाँ से, ये अच्छा काम नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने, क्या नहीं काम कर रहा भाई? हमारे मंटू सर को भगाओ, प्रेसिडेंट, ये बहुत यंग आदमी है और एनर्जी से काम कर रहा है, इसकी एनर्जी कम करो। तो मंटू सर ने बोला धर्मेंद्र सिंह मैं क्या करूं? तो हम बोले सारे चोर के साथ चोरी करो, यही होगा ना। एक आम सड़ा देता है तो सड़ जाओ। अब आप लोगों के ऊपर है, सारे स्टेक होल्डर्स जो बैठे हुए हैं और हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, कि देखो इस तरह के टीचर्स अगर हमें मिले तो हमारा प्रोफेशन बहुत जागेगा। हमें अच्छे आइडियाज़ की ज़रूरत है। और आप जैसे सर, जैसे सीसी मेंबर हमारे बैठे हुए हैं, देवासी सर, सॉरी मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि आप हमारे बगल में आज सीसी मेंबर बैठे हुए हैं हमारे, और हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। आज पहली बार इनके मुंह से एक ज्वाला टाइप का आवाज़ सुना, लगा कि एक स्टूडेंट्स बोल रहा है। मुझे लगा कि मुझे पुराने दिन की बात याद आ गई कि जब मैं भी आग लगाता था,
पूरे बच्चे लोगों के बीच में, लड़के लोगों के बीच में सर निरंजन जी हैं और मुझे बहुत दिन से देख रहे हैं कि मैंने काउंसिल भी बनाया, बड़ा आग लगा के बनाया, मार भी खाया, बड़ा आग लगा के मार खाया, तो वो हैं मेरे समय के। तो मैं आज बड़ा अच्छा लगा इनके साथ कि ये आज स्टूडेंट्स के तरफ से बोल रहे थे, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दिस टाइप ऑफ स्पीचेस और आपके बीसी साहब से भी अच्छा लगा कि इनके जो मार्गदर्शन है, जो हम्बल हैं, बहुत ही हम्बल है मुझे लगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर के बगल के हैं, है ना। मुझे पुराने दिन की बात आ गई जब मैं 2 रुपया में चकद्दरपुर पहुंच जाता था, है ना। मैं वहाँ भी वर्किंग किया हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, है ना। बट रिसेंट में एक बहुत झगड़ा हो गया इनके एरिया में, चकद्दरपुर में नेम एंड फेम आ गया। तो एक्चुअली क्या हुआ, बोला कि सबका नाम आ गया पेपर में, हम लोग का चकद्दरपुर का नाम नहीं आया, तो कुछ ऐसा करो कि नाम आ जाए। तो बोला क्या करो, मतलब मर्डर कर दो। तो उन्होंने 2-3 का मर्डर करवा दिया, बोला पेपर में नाम आ गया। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो भाई। इसी संदर्भ के साथ देखो बच्चे, अगर मैं कुछ पूछूंगा आप लोग जवाब देना, अपनी इंटेंशन से वहाँ भेज देना। और मेरे ख्याल से इस तरह के टीचर्स को जरूर लाइक करना जो आप लोग के लिए बोला है। और आई एम मस्ट थैंक्स टू ऑल यू फैकल्टीज, और आज मैं खड़े होकर आप टीचर्स को सलाम करता हूँ, आपके डेडिकेशन को, ठीक है, जो बच्चे को पढ़ाते हैं। थैंक यू ऑल। Thank you, sir, for a wonderful session. Now, I would request every one of you to please stand up for taking the pharmacist oath. Of India in relation to the community and shall act as an integral part of healthcare team. I shall uphold the laws and standards governing my profession. I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute to the advancement of pharmacy and public health. I shall follow the system which I consider best for pharmaceutical care and counseling of patients. I shall endeavor to discover and manufacture drugs of quality to alleviate sufferings of humanity. I shall hold in confidence the knowledge gained about the patients in connection with professional practice and never divulge unless compelled to do so by the law. I shall associate with organizations having their objectives for betterment of the profession of pharmacy and make contribution to carry out the work of those organizations. While I continue to keep this oath inviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of pharmacy respected by all at all times. Should I trespass and violate this oath, may the rivers be my lot. Thank you. Thank you. I find it to be my pleasure to address you people who are the young minds of today and responsible citizens of tomorrow. I and whole of our dedicated teachers team appreciate the efforts. So here I feel privileged to extend my warm welcome
to Dr. Onnesha Barik, Assistant Professor, to deliver a vote of thanks. Madam, please. Good morning, one and all. What an eventful yesterday it was. We had Professor Ravichandran, Director NIPER Kolkata, Professor Dr. Ranendra N. Saha, former Director BITS Pilani, Dubai campus, Dr. Nishant Chakravarti, Associate Professor IIT Kharagpur, amongst us. Again, a very warm welcome to all of you to the second day of the third National Conference on Healthcare, Industry and Academia Summit 2022 and beyond, organized by School of Medical Sciences, Adamas University, Kolkata, India, in collaboration with Central Ayurveda Research Institute, Ministry of Ayush, Government of India. On behalf of SOMS, I feel elated to be standing here to express my sincere vote of thanks. I, on behalf of the organizing committee, convey my deep regards and hearty thanks to our Honorable Chancellor, Professor Dr. Samit Ray sir, and Vice Chancellor, Professor Dr. Naveen Das sir. I am also thankful to the Dean of SOMS, Professor Dr. Sajal Kumar Jha, and HOD, Professor Dr. Sanjay De, for guiding us through the baby steps taken towards this mammoth task of organizing a conference. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels started rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated faculty members of SOMS, non-academic staff members, the media team, IT team, and student volunteers. On behalf of the entire institute, I would like to show our gratitude to the chief guest, Professor Dr. Debashish Bhattacharya, Director of Medical Education, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal, and our eminent guests of honor, Sri Dharmendra Singh, Executive Council Member, Pharmacy Council of India, Mr. Debashish Bhattacharya, Inspector of Drugs, Executive Member, West Bengal State Pharmacy Council, Mr. Shubhendu Saha, Director, Aspire Scientific, and Ms. Shreya Datta, Research Officer, Department of Pharmacognosy, Central Ayurveda Research Institute, Kolkata, for accepting our invitation and for being here with us today. Even in this short span of time, since the announcement of the event, the response from the participants from several colleges and universities has been phenomenal. So last but not the least, as the joint convener, I extend my warm welcome to all our participants. I am sure that they will be able to enrich themselves with all the ongoing technological advancement pertaining to academic research and healthcare industries, not only from the lectures, but also from the numerous poster presentations and oral presentations going to be showcased throughout the day. Finally, I would like to thank each and every one of you for being present here today and making this event a memorable one. Thank you so much. Thank you, Madam. Thank you to all our dignitaries who are on the dais, and I would request each one of you to please take your respective seats of the dais. Thank you. Let us now start with our first technical session. Before we move ahead, I would like to welcome our speaker, Ms. Shreya Datta, Research Officer, Botany, Department of Pharmacognosy, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. I would request Dr. Shoma Das, Assistant Professor of Adamas University, to kindly felicitate her. Ma'am, please. Ms. Datta, we request you to please come up on the stage.
Thank you. It is my privilege to welcome ma'am. She completed her post-graduation in botany from Baligan Science College, Calcutta University, and has 16 years of research experience in the Department of Pharmacognosy, Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. Regarding botanical and chemical standardization of crude drugs and their quality assessment is her main criteria for research. I would welcome ma'am now on stage for the further session. Ma'am, over to you. এটা দিয়ে চেঞ্জ করব তো আচ্ছা এইটা দিয়ে না আচ্ছা পয়েন্টার আছে কি হ্যাঁ এটাতে পয়েন্টার আছে এই যে থার্ড কোথায় বলবো এখানটা বলে এটা ইউজ হ্যাঁ আমি এইটা দিয়ে চেঞ্জ করে এখানেই দিব এটা না হ্যাঁ কি কার্ডটা দিয়ে করে দেখেন একটা দেখে নিন যে এটা ঠিক আছে হচ্ছে কিনা এই দেখুন নেক্সট এটা প্রিভিয়াস এটাই ফার্স্ট ছিল তাই তো এটাই ফার্স্ট ছিল এটাকে ইয়েতে করে দিন কি আচ্ছা এটা ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এক মিনিট তুমি যদি ফটোগ্রাফ সাথে করো না তাহলে একটু ট্রান্সফার করো আমি যে এই প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে তাকে একটু বলে দিন পার্মানেন্ট ইনস্টিটিউটে একটু মানে দিতে হবে ওকে আমি যে প্রেজেন্ট করছি একটু আমাকে একটু মোবাইলে ট্রান্সফার করে দিন ওকে Good afternoon, students. I am very much grateful for inviting me to present here, and I wish the grand success to this conference of Adams University. I am purely from botany background, and whatever your course, I don't know, but pharmacognosy is the subject of your course, I think. For that purpose, botany is a very important subject to do pharmacognosy, and pharmacognosy is oriented with botany and chemistry. And before starting everything, I should acknowledge my Director General CCRAS and the Assistant Director in charge Dr. A.K. Mangal from our institute CRI Kolkata, Central Ayurveda Research Institute Kolkata, and my department, all colleagues of my Department of Pharmacognosy. So today, one thing I like to say that all the research of health herbal industries is based on the medicinal plants. If we don't identify the right medicinal plant, then all the research will be useless, because we have to identify the medicinal plant at first with which we will proceed our research. If we don't identify the right species, then the whole research will be useless. So the botanical identification and chemical identification is very important for plant identification. And today my topic is the pharmacognostical techniques. I will discuss very basic techniques. You know everything, just recollect the procedure. Pharmacognostical techniques for botanical identification of medicinal plants, their adulteration and controversies in Ayurveda. Because Ayurveda is based totally on medicinal plants and herbs. Now let's start from crude drugs. What are crude drugs? Is main types of organic and inorganic. From organic, it is plant and animal based, and inorganic is mineral. Crude drugs, organized drugs are whole plant
root, stem, bark, leaf, flower, fruit, seed, etc. And unorganized are the exuded from that oil, mixed volatile oil, fixed oil or volatile oil, gum, resin, balsam, latex, wax, extracts, etc. The crude drugs, these are the differences between organized and unorganized drugs. The organized are cellular. These are plant parts, definite structure, solid, described by botanical characters. Microscopy is important, and organoleptic study is common for both. And unorganized drugs are acellular. Mainly these are acellular, not cellular. It's derived substances through extraction, purification, and drying. And these are the solid form, semi-solid, liquid, described by physical characters, not botanical characters. The chemical taste and physical standards are important, and organoleptic study are important for both the type. These are the drug research. At first we survey and cultivate or collect the medicinal plants and supply to the institutes. What the work is done in our institute, I will explain. Drug standard, then it divided into two departments, the pharmacognosy for pharmacognosy and diagnostic characters for identification, and drug standardization is chemical standardization for and then it is the isolation and characterization of active principles is also done there. And for pharmacology, the safety profile, we do the pharmacology, we have the rats in the animal house and we test it, and then clinical trial will be done. What is drug standardization? The confirmation of its identity and determination of its quality and purity and detection of nature of adulterant by various parameters like morphological, microscopical, physical, chemical, and biological observations. And what is pharmacognosy? It deals with all subjects of botany, chemistry, pharmacology, and it is the interdisciplinary science which covers all aspects of study of drugs of natural origin. And these are the objective to develop standards for identification of authentic drugs, their substitutes and adulterants, and assessment of quality of raw drugs. In pharmacognosy, we do the organoleptic study, morphology, quantitative microscopic study of leaf, microscopy of crude drugs, that is TS, RS, RLS, LS, etc. The cell contents of powder study, phytochemical study, like HPLC, HPTLC, and fluorescence analysis, behavior of drug extract with different reagent or chemical, what coloration they give, and what modification they give, physicochemical constant like ash and extractive value, and also we do the foreign matter and loss on drying or moisture content we also do. How to authenticate the raw drugs? At first we process, catalog, and profile the raw drugs, and then we do the microscopy, and we also do the pesticide residue and the aflatoxin study, the microbial loads, and the DNA barcoding and heavy metal analysis. DNA barcoding is the most finest and modern way to identify the species. It is the highest form of way. But in our institute, DNA barcoding is not done here. The CCRS Institute in Pune, it is done there. The tissue culture, DNA barcoding, all things are done there. For botanical study, we have to give for dossier, for any formulation, when we do some from the raw material to the formulation, we prepare the dossier. For the dossier format, you have to give these aspects, and this study you have to write in the report. And at first it comes the passport data. Whatever you collect from the field, you collect it from the live habitat or from market. Then you have to give the these features in the label of the drug. If from collected from field, you have to give the drug name. In Ayurveda, Sanskrit is most important. Sanskrit name you have to give. You have to give the local name from where you have collected this. The botanical name, family, habit, botanical name with author citation, and family, habit, habitat, part to supply, date, time, place of collection, GPS data, and collected by whom you have to give the name. For procured from market, you have to give all these things, and but you trade name, you have to give this, the trade name.
Method, the morphologically, you have to, the visual inspection of overall appearance, physical form, development and external structure of plant or plant parts with naked eye. And for morphology, you have to see the size, this length, diameter, width, shape, any specific or non-specific surface characters, any hair, trichome, lenticel, glands or pits are there or not. Other external features like protuberance, ridges, furrows are there or not. Many special markings for that particular species you have to give. And the most important, organoleptic study. If you go to market to procure some drug, you have to know what type of organoleptic character they have. If you know the organoleptic character, you can spot identify the plant. And in the procurement of drug from market, you have no lab facilities there. So your organoleptic study is the most important. Some drugs have typical characteristics, salient features of organoleptic character that show that the drug is that. So it is organoleptic study is very important. This is the skeleton for botanical description for roots and rhizome. You have the dimension, color, shape, branching, condition, rootlets, direction of growth, surface characters, food storage if they are roots and rhizomes are the storage organ of food, and fracture and texture, order and taste, peculiarities you have to give. This is some example of the fresh drug and the market drugs. When we get it for fresh from and is the marketed from is Swidenia somniferas ashwagandha. It is the fresh from, and left side it is the dried from. How it looks, and it is the asparagus racemosa shatavari, and it is the dried form. And it is the Plumbago zelenica. It is the dried form of that. This is the rhizome drugs. We know the haldi. This is the fresh from and is dried from. And this gingiber officinal or adrak. This is the fresh from, and in market they just chopped it and put fragment, and the dried form looks like that. And it is the Nardwostrakis jatamansi. What is jatamansi? The trade name. And it is the fresh from. It is looks like a brishchik, a scorpion, but it looks like when dried it is totally is not matching the fresh form. And this is the skeleton for stem, the kind, direction, shape, surface, phyllotaxis, color, order, taste. These are the stems. This is Ephedra gerardiana. This is a fresh form when collected, and it's a dried form. This Tinospora cordifolia or guruchi. This is the fresh from, and this is the dried from, and this they cut into fragments and then sell in market. And in market is a skeleton for barks and woods. In barks, shape of pieces, dimension, color, outer surface, many points are common for the parts. And these are the dried stem and wood. This is Terminalia arjuna. This is arjun. This is Cinnamomum jalanicum. This is the darchini. This is Betula utilis, what we call the Bhujapatra. The ancient times, the Muni Rishi wrote down the lipis or in this Bhujapatra. It also have the medicinal value. And it is the Santalum album Seth Chandana. It is Pterocarpus santalinus, that is Rakta Chandana. This macroscopy, this looks like that. This Quassia amara, the fragments are, say, when we purchase it, in market, it looks like that, in market, in dried form. The skeleton of leaves, you have to give dimensions, conditions, phyllotaxis, color. In lamina, you have to give the composition, incision, the margin, what the type of margin, how incised is that. Incision, venation, apex, base, general outline, surface texture. And then petiole, is that petiolate or not petiolate? Petiolate. Leaf base and insertion. These are the type of leaves. This is pinnate, palmate, reticulate, dichotomous, parallel. You have to know this. You have to give the character when you describe this. And these are the margin, in respect of margin, these are the
derivatives, and these are the cassia angustifolia. When it's fresh from, this is looks like that, and this is the dried from the senna. Cassia, the senna drug, we get it from market. This looks like that, and the digital is Purpurea inhabitat, and it is the dried form. As Adatoda vasica vashak is the fresh form and the dried form. It is the, for inflorescence and flower, you have to give the color, morphological nature, form and dimension, kind of axis depending on rachis and receptacle, and bracts, types, distribution of flowers you have to give, you have to mention. And obviously in flower, you have to give the calyx, corolla, the reproductive part is very important. By reproductive part, we can identify a plant. A taxonomist always identify a plant by their reproductive part. Without reproductive part, a plant can be, the species cannot be identified properly. So you have to give the number, cohesion, insertion, peculiarities of stamens and the gynoecium. These are the inflorescence type, that is spike, raceme, panicle, cymes. You have to identify the type and then have to give in your report. And basis of inflorescence and flower is the main part of the plant to identify. The BSI also don't identify the plants if you don't give the herbarium sheet without the reproductive part. You have to give the flower or fruit or inflorescence with that. This is the flower drugs. Inhabitat is Woodfordia fruticosa dhataki, and it is the dried form in market. And this is the Syzygium aromaticum, लवंग. लवंग का फूल जो है वो ऐसा देखने में लगता है. जब हम मार्केट में प्रीचन में जब यूज़ करते हैं तो लौंग ऐसा हो जाता है. तो मार्केट में ड्राइड ड्रग ऐसा, तो जब हम कलेक्ट करते हैं तब ऐसे हो जाता है. तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लवंग का फूल है. फूल देख के हम पहचानेंगे. तो माइमूजब सेलेंगी इज बकुला. बकुला का हैबिटेट में पिक्चर, दिस इज द ड्राइड फॉर्म. And this fruit and seed, you have to give the pericarp, loculi, placentation seeds, and special adaptation for dispersal. Any seed have any special adaptation for dispersal in air, in water, you have to give. And in seed, you have to give the dimension, hardness, seed coat, and special adaptation dispersal is also here, and weight of 100 gram seed. And this is the fruit drugs, is amlaki in fresh form, and it is the dried form, totally different. And it's the Embellia ripes, which is Embellia ripes in fresh form, and it's a dried form, and it is Egil marmelos in fresh form, and this is the dried form. These are the seed drugs, Soralia corallifolia, that is called bakuchi. And this is Azadiracta indica, neem ka seed. And this is Brassica nigra, that is the sarso ka seed, and Althea officinalis is called in Ayurveda khatmi ka seed. These we have to identify by their morphological nature. Now come to the organoleptic parameter, this color. By color, how can we spot identify the plant? This is Abrus precatorius, is half red, half black. If you see the Abrus precatorius seed, you can say that this is the plant of Abrus precatorius. You can just, by the color, you can spot identify the plant. You don't need to do any chemical or any other test. This is a Syzygium indicum, this is a kala til or white til, both are Syzygium indicum. And these are this is the, by tool order, we can identify Acorus calamus, that is Vach. This is a like horse, it is, it smells. By the smell we can identify Acorus calamus. This is Widenia somnifera, Ashwagandha, the urine of horse. Is not smells like horse, the urine of horse. It smells like urine of horse. So the if fresh root is, it is the root. Root is there. You can smell it. The urine of horse. You can identify this is the Widenia somnifera. This Pideria fotita, what we call prosharini or gadal. In Bengali we can say gadal. Only by the smell you can identify the plant. The Pideria fotida. Trachispermum emmi, the ajwain. Phoniculum vulgare, the mouri, जो सौंफ बोलते हैं. The Ocimum sanctum tulsi.
मे बी द तुलसी का बहुत सारा वेराइटीज़ है, फिर भी ऑसिमम जेनस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तुलसी से ऑर्डर से. These are the microscopes for macroscopic studies. These are the simple microscopes, student microscope, all know that. And this is the stereo zoom microscope from where we can see, we can observe the detailing of macroscopy. In seed drugs, seeds are very small. The texture on the surface we cannot identify by naked eye or anything. But under the stereo zoom microscope, we see the ornamentation, the pattern, everything very clearly under stereo zoom microscopes. And microscopy is the detail of cell structure and arrangement of cells of tissue under compound microscope, useful for differentiating similar species. That is how we do this for TS or LS. We just take the crude drug sample, fresh or dried, washing and soaking in water if dried sample, if sample hand sections by razor or by rotary microtome by preparing the wax block, you can do the sections and then you can see under microscope. Then temporary slide preparation with 50% glycerin solution, and permanent slide preparation by different grades of alcohol, staining with safranin and light green solution and mount in Canada balsam, and paraffin sealing for observation. These are the type of pictorial representation of two types. This is a camera lucida drawing, is not used now, but when there was no digital microscope, no modern tool, then the only procedure was the camera lucida drawing. Then what they do, on microscope, they just fit a prism and you just see through the prism, the exact image of your material will be magnified to your copy and you can draw the picture. There were tools, we use this tool, but now digital microscopy have come, more clear picture and more accuracy have done, but it was a more primitive and authentic procedure that was followed in ancient time. This is the prism type, this is the mirror type, and this is the drawing tube type attachment. By this we can do camera lucida drawing. It was invented by the William Hyde Wollaston to facilitate accurate sketching of objects. This is by the digital photomicrographs. We done the digital microscopic camera in our lab. We have the Olympus CX21i microscope with Magnus DC14 camera, and this is a digital laboscope Primostar Gs, and by this digital laboscope we can do camera lucida by here also with this microscope also. The facilities is there. This is very important thing, that is micrometry, how we can do the magnification and standardization of subject or the microscope. The science of measurement of the dimensions of an object being observed under the microscope. This is a very basic study, you all know about that. The object to be measured is calibrated against some special types of measuring devices. The stage micrometer, this is a slide, just 1 millimeter scale is drawn on there, and the smallest division is 0.01 millimeter. This is 100 times, and the ocular micrometer that is placed under the eyepiece or eyepiece micrometer is also called eyepiece micrometer, attached to or put into the microscope. How we can calculate 1 division of ocular is equal to the number of stage micrometer divisions by number of ocular micrometer division into 10. Suppose if we get 1 division of ocular is 4 mu, and you have got a starch grain under your microscope that covers the 5 divisions of ocular. Then you know the 1 division of ocular is 4 mu, then 5 division of ocular is 4 into 5, 20 mu. That the dimension, that the diameter of the starch grain, you will get the 20 mu. Now, like this you can calculate the size of the cell organelle. Everything, every diameter. These are the transverse section of stem, rhizome, root and seed. I have put these are the work of mine, and these sections, by these sections you can describe the layers of cell arrangements.
section is important. By the layers of cell arrangement, you have to, when you describe the, powder study, you get the cell organelle, that you get the cell structure. But in the particular sample, in stem, root or leaf, where the structure is situated, you, for understanding that, you do the TS, transverse section, or RLS or CLS, where the cell or where the tissue system, or just orientation of tissue system to understand, you have to do transverse sections. These are the transverse section of leaf, the midrib and lamina. And the midrib always resembles the petiole, because petiole is goes to upperward and it forms the midrib. So there are anatomical similarities in midrib and petiole. This is the, in case of powder study, the dried sample is powdered by mortar and pestle. In Ayurveda, we do the traditional method, mortar and pestle, and then passed through sieves. 40 to 60 sieve is the best, preparing fine uniform powder and wash thoroughly to clear all extraneous and interfering materials of formulation. Formulation and single drop, both. So chloral hydrate solution is the solution, the macerating solution, which softens the hard tissue and just removes all the starch and extraneous materials from your sections or powder, and you get the clear pictures of cell organelle or sections. Just powder treated with chloral hydrate solution, leave it, mixture warm slightly on hot plate, removing air bubbles and starch grains and mucilage. Prevent the mixture from drying out, adding sufficient solution. Keep the mixture covered for 3 to 4 hours for perfect maceration. We just leave it for overnight. Next day we just prepare slide. Add chloral hydrate glycerol solution to the mixture. Mount in 50% glycerin solution slide. These all our powder slides are temporary. So 50% glycerin solution we give, and paraffin sealing is done there. These are the histochemical tests for powder samples. If in the sample starch is there, if we give ethyl alcohol, then it gives colorless. But if we give the iodine solution to the sample, if starch is there, blue-black coloration, instant coloration is done. By mixing KOH solution, the presence of anthraquinone is observed. Red to deep pink coloration, it gives red to deep pink coloration. If we mix ammonium vanadate in sulfuric acid, if strychnine and brucine is there, the violet coloration we get. If we give ammonium vanadate in nitric acid, in strychnine and brucine is there, then orange red coloration we get. We get fluoroglucinol solution, HCl. This we done very often. The fluoroglucinol solution give the lignified tissue a pink or deep pink or red coloration. And this is temporary, because after 15 to 20 minutes the color vanishes. If we give ferric ammonium sulfate solution, if tannin is there, blue, black or green, black coloration there. And is a trick, the Indian ink trick. If mucilage is there, then we put the sample, the Indian ink, you apply it on sample. If mucilage is there, colorless mass against black background, spreading under the pressure under microscope. Then Molish reagent, if inulin, if starch is absent in the sample but inulin is present, by Molish reagent you get reddish violet coloration. In picric acid in alcohol solution, if you give, if alluron green is there, then bright yellow coloration we get. These are the eye test or histochemical test for confirmation. So what we will see for powder analysis, we see the specific cell type like epidermis, trichomes, stomata, ground tissue, mesophyll tissue, cavity, lignified tissue, etc. And you see the cell inclusion. Cell inclusion plays a very important role. The starch grain, calcium oxalate, calcium carbonate crystal, alluron grains, fat oil globules, lignin, tannin, mucilage, etc. And these we see the tissue system, epidermal tissue system, ground epidermal tissue system is also parenchymatous tissue, and ground tissue system, that is cortical tissue, and vascular tissue system, that is xylem and phloem tissue, and the meristematic tissue, that is growing, and there is a permanent tissue, the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, all you know this. And the cell
cell content, we see the calcium oxalate crystal, that is single or aggregate, starch grains, that is simple or compound, alluron grains, fixed oil, fat, mucilage, etc. The plant inclusions are very particular identification, that is starch grain and crystal. Crystal play very important role. What are they? Among various cell contents, crystalline deposit of different types are found in different organs of plants. These minerals, crystals are of three types: calcium oxalate, calcium carbonate, and silica deposits. These are calcium oxalate crystal. How they look like? The prismatic, acicular, idioblast, cluster, rosette, double crystal, microcrystal, very micro, and commonly found in plants, and calcium carbonate, that is also called cystolith, which present in the cell called lithocyst. This is round grape, like a bunch of grape we see. You just whatever you have read in your textbook, but under microscope when you study, that both are different, not similarity. If you have experience for longer days of observation, then you can identify this is the lithocyst, because in textbook very clear and very very beautiful pictures are present in the textbook, but when you see the literally, when you get the sample, the cystolith is like this. You have to identify the cystolith under microscope. Then you have to study the slides. Around 20 slides you will see. Then you will get in 2 slides the cystolith. You have to study long. The round grape branch, double cystolith, cigar shaped, balloon shaped, irregular. These are the calcium carbonate cystolith, and silica deposits are irregular deposit, mostly in monocot, the silica deposit we get. These are the ergastic or non-living cell contents, the rod shaped, microsphenoidal, prismatic crystal, fan shaped, tablet, dumbbell. These are the all camera lucida drawing. This is silica crystal, acicular, and rosette crystals. In Plumbago rosea, we get 2D, 3D rhomboidal crystals. In Plumbago zeylanica, we get prismatic crystal. These are species identification. Cinnamomum zeylanica, we get acicular crystal, and Cinnamomum cassia, we get raphides. Amomum raphide is calcium carbonate, and acicular crystal is calcium oxalate. Amomum subulatum, we get micro rosette crystal. Elateria cardamomum is a rosette crystal. As a Terminalia arjuna, the rosette crystals are present, and Terminalia tomentosa, there are cluster crystals. These are big in size. These are types of stomata, you know, anomocytic, anisocytic, parasitic, diacytic, actinocytic, and cyclocytic. When the guard cell are no more different from the epidermal cell, then it is called anomocytic. All cells are similar in nature. Then when the guard cells are slight more different from the epidermal cell, and one cell is larger than other two, then it is called anisocytic. In parasitic, the parallel with the axis of stomata. Diacytic, the 90-degree angle of stomata axis. And this is actinocytic, star shape surrounded by everywhere, the guard cell, and this is the cyclocytic, this is the pattern. And these in monocots we get, in right side monocot, it is a special type of stomata seen in all monocots. All monocots, rice and grass family. In this type of stomata we can see. These are the trichomes variety. These are epidermal outgrowth, the glandular trichome, the mainly covering trichome we get, but in some species there are glandular trichomes like cannabis, like capsicum, like hyoscyamus. These are glandular trichomes are there. So these are the identifying markers. These are the types of sclerites. This is brachysclerites, very large. The right side, this is macrosclerite, this is eye-shaped, mostly present in seeds. That is osteosclerite, bone-shaped. This called osteo, like bone-shaped sclerite. This is astrosclerite and trichosclerite. These are the forms and types you have to identify. And when we give fluoroglucinol to the lignified tissue, these sclerites get the deep pink coloration. You can identify among the parenchymatous cells that these are the structures. And these are also sclerites. These are also fluoroglucinol stained lignified tissue. All the brachysclerite and macrosclerites are there.
These are general types of xylem vessels or vascular tissue from slide. This is pitted vessel. These are not the textbook pictures. These are the all slide pictures. Under the microscope, this is a pitted vessel. This is reticulate vessel, left side, right side. This is scalariform vessels, and these are the spiral vessels. 4, 5, 6, 7. These are the spiral vessels, and these are the starch grains. The rice starch is angular and prismatic, very small. These are maize starch, थोड़ा उससे बड़ा है. Wheat starch, this is oval shaped, and this is potato starch, very large. You have from the structure of the starch grain, you can identify the species, and the starch grain get blue black when they mixed with iodine solution. And these are the calcium oxalate crystals. Examples: prismatic crystal in Plumbago zelanica, we get prismatic crystal. In Terminalia tomentosa, we get cluster crystals. Cluster crystals are cluster of prismatic crystal. It is slightly different from rosette crystal. Rosette crystal are star shaped, very small. These are the rosette crystal of Elateria cardamomum, छोटी इलायची, इसमें rosette crystal रहता है. Cinnamomum zelanicum is a acicular crystal, needle shaped. As a Tinospora cordifolia, crystal fibers are there. In neem also, neem stem bark and Tinospora cordifolia stem, crystal fibers are present. If you don't get crystal fiber, the sample claimed the Tinospora cordifolia. It is not Tinospora cordifolia. It is a salient marker of Tinospora cordifolia. In neem stem bark also you will get the crystal fiber. It is a Cinnamomum cassia microcrystal or sandy crystal present. These are the pollen grain types. This is a book picture. Pollen grain, the tricolpate, monoporate, monocolpate. These are the types of pollen grains. And this is the textbook of pharmacognosy by T.E. Wallis. This is a very important book, and where you can get the ABCD of pharmacognosy. This is a very father or mother book of pharmacognosy. It's a very good book. Every part they describe, the anatomical structures are described. I have taken so much help from this book, and it has helped me in every way. And this is a Pinus sylvestris. The two protuberances of pollen grains are there. By the pollen grain you can identify the Pinus species. In Pinus the pollen grains have two wings. These are some microscopic markers. In Shatavari we get the long lignified trachid-like stone cell, fiber trachids. We say it is a long elongated stone cell is golden yellow coloration, and right side the cluster of raphides or acicular crystal, bunches of acicular crystal present in parenchymatous cells. These are microscopical markers. If you don't get this, then there is confusion in Shatavari. In Tulsi leaf, the covering trichomes are the salient features. The covering trichomes and the glandular trichomes, both trichomes are present in Tulsi. In Amlaki, the testa cells are angular, and the patches of angular cells of testa is there. And the parenchymatous cells, there is angular deposition in parenchymatous cells. You can see and observe under the microscope and identify the amloki fruit. And this is the Nux vomica seed. You all know, you do this in your lab. This is cytoplasmic fiber and the sclerenchymatous fiber. If we the cytoplasmic or lignified fiber, if you get give fluoroglycinol, it get reddish pink, and this is the for identifying tool. And this cannabis species, the trichomes are very important. It is glandular trichomes. All the narcotic property are present in the glands, and this is the cannabis species. In Gokshura, we get the rosette crystal and cluster crystal, and in Elateria cardamomum, choti ilaichi, under microscope there are special perisperm cells where a small prismatic crystal is surrounded by lots of starch grains, and under microscope it looks like that. If you get some this type of cells, then you
confirm that it is the powder of Elateria cardamomum. In Alstonia scholaris, that is lattice tubes, you identify characters: Cinnamomum xylem, very small amount of cork; Cinnamomum cassia, large amount of cork. In leaf, Digitalis purpurea, one large water pore, rarely two on each both. These are the microscopic character. In Lawsonia inermis, epidermis over the vein strongly striated. Datura metal, large crystalline masses in the epidermis and mesophyll. In flower, Eugenia aromatica, few small pericyclic fibers, no stone cells, no starch. These are identifying characters. These are the quantitative study of leaf. These are stomatal number, stomatal index, vein islet number, vein termination number, palisade ratio. You all know that. We do this and for detailed study. And these are the instructions. Then in case of Ayurvedic formulation, the last one I will describe. In method of preparation of essential as only prakshepa drabya, churna, raw ingredients not more than 12. If it is greater than 12, then no need for pharmacognosy, no need for microscopic study, it will be confused. Below the 10 numbers of raw ingredient, we do the microscopic study in formulation. And if it is churna, not avala, not extraction, not anything, only churna. If we get no cell structure, you will get except churna. These are some comparison. These are some comparison between the Vedas, stem bark, Hollarina pubescens and Wrightia tinctoria. Here amount of stone cells are greater in Hollarina pubescens. This is Trichoxanthus dioica, male and female plant. It is all are camera lucida drawing. These are the glandular trichome mainly present in the female plant. These are microscopic identity of flower parijat. All this is from macroscopy to powder. It is done here, and the time is short for because I am just fasting my ear. The microscopic identity of Eugenia oogenesis stem bark. These are the microscopy. Now the challenges quality control is adulteration and controversial identity. What is adulteration? Adulteration is the practice of substituting the original crude drug partially or fully with other substances. These other substances can be the substitution of the drugs with substandard drugs, the substitution of the drugs with exhausted drugs, presence of vegetative matter, substitution of the drug with substandard commercial varieties. Foreign matter can be a adulterant. Even if we collect the stem and we just mix with root, then root will be well established in Ayurveda by different identities. This is Nagavala from that book chapter. This is Nagavala. This Nagavala, the several species are being used in the name of Nagavala. Grevia tenax, Grevia hirsuta, Sida spinosa, etc. But in ancient text, it was written that the Nagavala resembles to the drug of deer. That is, resembles the Mrigilang duck, the dung of deer, that resembles with Grevia abutifolia. This should be the Nagavala. But in market, there are confusions. The Vriddhadaru, in ancient texts, the author supported this statement by classical shloka, where it was clearly written that the plant should yield the latex and beers of yellow fruits. And bears yellow fruits, that is Phalesu pita. But in market, Argyria nervosa having violet flower and brown fruit. But Argyria sericea actually have the yellow fruit and yield the latex. So the confusion is there. In Jivanti, many species are there in market name of Jivanti, Leptadenia reticulata, Leptadenia pyrotechnica, etc. But the author supported his statements by the classical shloka, where it was clearly written that the plant should yield the white latex. Leptadenia reticulata yield the yellow latex. It is confusing, but in ancient shloka, it should yield the white latex that is present in Telosma pallida. Telosma pallida, that should be the Jivanti actually. So confusion in the market. It is the Rishi work. Is according Malaxis muscifera kuhns is considered as. These are the pictorial evidence of some important Ayurvedic plants. They are adulterants. Is Ashoka, Saraka Ashoka is adulterated with Polyalthea longifolia. Kumkuma, Crocus sativus, the Kesar is adulterated with Carthamus.
tinctorius. This is Brahmi. In the name of Brahmi, two plants are there in same name. This is Bacopa monieri and Centella asiatica in name of Brahmi. In Tulsi, Ocimum tenuiflurum often mixed with Vitex nigundo leaves, and it is a adulterant. These are some official document of our council, the Ayurvedic Pharmacopoeia of India. You can get it from internet also, and you can get it from council. The volume 1 to volume 6 for single drugs, and the microscopic atlas with pictorial representation of pharmacopoeial drugs. These are the books. And Ayurvedic Pharmacopoeia for formulations, part 2, total 152 compound formulations have been covered. And these are other books, the Ayurvedic Pharmacopoeia of India for minerals and metals, quality standards, Indian medicinal plants, ICMR, practical pharmacognosy by P.K. Lala, very important book. Textbook of pharmacognosy by T.E. Wallis, I have mentioned. Indian medicinal plants by Kirtikar and Basu, my pharmacognosy of indigenous drugs. That is the publication of our council, 1 to 3 volume, and microscopic profile of powder drugs from Jamnagar. Thank you. Thank you for your passion in listening. Thank you, ma'am. Now, I would request Dr. Shoma Dash to present a token of appreciation to our speaker. Ma'am, please. Thank you. It is a pleasure for all of us to have another eminent personality, Mr. Shubhendu Saha, Director, Aspire Scientific, as the guest of honor for today's conference. Heartiest welcome to you, sir, and I would request you to please come up to the podium and take your respective place. Before we begin with the session, I would request... Sir, yes. And before we begin with the session, I would introduce you to all of, I would introduce sir to all of you. Mr. Shubhendu Saha has completed his Masters in Science in Organic Chemistry from Vidyasagar University, Midnapur, West Bengal. He was associated with Ankram as product manager for 18 years. After leaving Ankram, he has founded Aspire Scientific in the year of 2018 in the month of February. He is having an experience of more than 22 years on TLC and HPTLC for the method development, validation, application and instrumentation. He has also provided support to several HPTLC users. When we have with us Mr. Shubhendu Saha, why don't we listen to him for this session? Sir, welcome to the session. The place is all yours. Thank you very much, ma'am. Shubhendu, yes. Copy করব? কপি করার দরকার নেই, এখানে ডাইরেক্ট চালিয়ে দিই। ওকে। স্লাইডস এটা ক্লিকার আছে, এটা আপ ডাউন করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এক মিনিট, এবার দেখুন, এইটা ওটা না, এটা নেক্সট। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা প্রিভিয়াস। ঠিক আছে। Okay, good afternoon everybody, and I would like to thank organizing committee of this conference, national conference on healthcare industry and academia beyond 2022 for inviting me to share my knowledge with all of you, and thanks a lot for coming here, and I'll try my best to give you some more information so that your time will not be wasted. Okay, and previously that Shweta already informed you about the identification of any medicinal plant, how to identify microscopically, and it was very nice. And just an interruption. Yes, I would use
Yes. Just an interruption in between. I would request all of you to stay back in the auditorium. Do not move out of the auditorium because we are going to have the lunch session after this session of Sir is completed. So I would request all of your presence. Sorry for the interruption, sir, and you can continue for the same. Okay, thanks. And she already informed you about the identification of medicinal plant, different parts, microscopically how it can be identified. And there she mentioned about the adulteration, how that adulterant can hamper the drug qualities, as well as falsification, some different species, how it can be mixed or changed also. So these types of, now HPTLC, basically it is a high performance thin layer chromatography. So now why in the analytical lab or laboratory, why any analyst do analysis? The reason is, there are two reasons. One is qualitative analysis, another one quantitative analysis. Now, qualitative analysis, you know, suppose if somebody gives you any iron, so how can you identify that? You can use magnet, and physically you can tell, yes, it is iron, okay? And you can distinguish with aluminum also with that. Now, if somebody give you any aluminum and asks how much quantity is there, you can take weighing machine and just take the weight and tell this much present. This is the weight of the, that is called quantitative analysis, okay? Now, okay, this is in mg level, but if the quantity of the chemicals is very less, then identification and quantification, there are some instrumentation facilities are there. Like for identification, you can go for NMR, mass, FTIR, so different type of instruments are there. You can get the data from all, and any good chemist can tell you what is the compound's name, other things. But the problem start if it is a mixture. Now, you know, in pharmaceutical or whatever drugs you are using or medicinal plant, okay. Now I will talk about the herbal plant, like medicinal plant type. So, you know, medicinal plants, any plants, like we are, you know, that if any bacteria or infection is there in our body or virus, what it does, it generate, our body itself generate some chemicals so to counter those bacteria or virus. So since we are human being, you know that any medicine, any plant, that also is a life, okay? They also have a brain also. So now when something attack them, what they will do? They will try to react by themselves to reduce that attraction problem. So this is called stress. Suppose heavy sunlight, they don't want that much sunlight, so that is called stress. Suppose water, they don't have that much water, but they need that water, but they will generate some chemicals. Those chemicals are called secondary metabolites. Okay, so that means plant generate that one, and that stay with the plant's body. That's why medicinal plant, all the scientists all over the world, they are trying which chemicals is very much useful to make any drugs. Or already, you know, in Ayush, Ayurveda already establishes there this type of fraction, plants material, how to prepare, everything is there. Now thing is, since it is a mixture, so first thing we have to separate that. That is called chromatography. Now in the laboratory, how thin layer chromatography comes like that way, chromatography. So chromatography means you can separate the chemicals, okay. Now after separation, next step, it is coming, you can go for qualitative analysis like identification or quantification. So for identification, there are the procedure how to identify. We generally identify our sample with respect to our standard. It may be single chemical or any reference plant materials also can be a reference standard. So we can compare both. Okay, like that way we can identify this is the same plant or not, and it is chemically, not physically, okay. So low amount, like in nanogram level also we can identify.
Okay. Now, later on, if somebody wants to quantify that one, there is a instrument. You can just take that one. There are many ways. You can scan the plate with particular wavelength. Okay. So, with that chemical will absorb that radiation, it will give you the peak. Here you see the image. There are two spots are there. That is very nicely, it is actually after separation, two spots is visible under 366 nanometer. On the plate, 366 nanometer falls, and what happened from background, it is a dark, and that chemicals is giving fluorescence, mean visible light. So that's why we are able to detect there is something. There is a, you can say 6 track, 1, 2, 3, 4, 5, total 5 tracks are there. In that 5 tracks, one is standard. Suppose standard means known, we know this is a chemical, and others are sample. So we can compare, if all are same with the standard or not. So this is called identification. Sometime, and right side is this, see the peak. After scanning, the all spots is giving a, that like a peak type, peak profile. So when you get the peak profile, the software will integrate those peaks. After the integration, you will get the area or different volume also of that peaks. Actually, those peaks, the volume, proportional to the intensity of the spot. Spot means how much intensity, and area also. So now, if the intensity of the spot is more, again it is proportional to the amount of the chemicals. If the chemical amount is more, intensity will be more. If the intensity more, then your peak area will be more. So like that way we can calibrate directly amount and that peak area. So like that we can quantify also. This is called calibration procedure. Okay. So next, now the today topics is basically the principles, applications, and what is HPTLC, high performance HPTLC plates, and instruments also, and fingerprinting and quantitative analysis, and what is the advantage of HPTLC over other chromatography system. So now what is the principle? First principle is the solution. What type of chemicals you can do by HPTLC? Means you can analyze. There are two types of sample available. One is non-volatile, another one is volatile sample. Volatile means in normal temperature it evaporates. So HPTLC is not for volatile sample. Non-volatile, it should be non-volatile. That is the first requirement, okay, principle. That chemicals we dissolve in some solvent, some particular concentration, then apply on the plate. And that plate itself is a adsorbent. That may be silica gel or alumina, some other cellulose also, but it should be supported by glass or aluminium. Now, after application of our solution on the plate, we take the plate to separate the chemicals. We dip into the tank, then solvent moves, and due to the capillary action, while movement, it attract the mixture differently. Different affinity is there, and due to their polarity, different attraction and solubility also, chemicals separated on the plate. We just keep the plate like that way, so when the solvent moves through capillary action, some desired distance when it reached, we take out the plate suddenly. So what is happening? After that there is no movement. Whatever the separated spot, it stay on the plate itself. Then that plate we take for detection. Then if required, quantification also. Sometime we cannot detect whatever the detector we are having, then we derivatize that. Derivatize means, suppose you know any conjugated double bond is there, something, one compound, organic compound. It does not absorb UV or visible light, so you cannot see that. Okay. So what you can do? You can derivatize, means another reaction you can do on the plate, because silica gel is very good medium to do any reaction on that plate. So reagent need to be supplied only, then
some heat will be required and it will reaction will be completed and some other derivative will form which can be visualized. So you can just see. I will show you. Now detection is under 254 nanometer, 366 nanometer and visible wavelength. Before derivatization as well as after derivatization, if required, we can go for visible light and 366 nanometer. Now how to read the TLC plate? When you will detect under any documentation system, you will see this is the plate. The plate itself is a green color. Why it is a green? Because on the plate, that plate silica gel material contains some fluorescence chemical. Fluorescence means some fluorescence chemical 1% or 0.5% mixed with the silica gel. So when 254 nanometer fall on the plate, it can tell there is something which is blocking from, because that's why it is not, fluorescence is not coming. So we can detect that under 254 nanometer. Nowadays many plates are available. Actually it's maximum 95% analysts use that type of plate only. Silica gel 60 F254. F254 means fluorescence chemical has been added. So this way we can read. And how to read that one? We will apply the standard and sample side by side, and you see two spots, one is standard, another one is sample. So the position of the spot should be equal, that is number one. Second is color of the spot. Of course there are no color, only black color, but other wavelength we can get the different color also. And intensity of the spot. Intensity of the spot generally gives you, I told you before, if the intensity more, amount more. Intensity less means amount less. So some idea it is more than your standard or less you can get. This is called semi-quantitative. Okay. No other instrument like HPLC, GC also that it can be done, cannot be done. Now for herbal sample, how to just read the TLC plate. After separation and under the documentation system, we can see this is actually plate image we have taken under 366 nanometer. Same plate. So when 366 nanometer, what is happening? The background will be black and spot will give you the fluorescence, different colors. Those are flavonoids. This is a very colorful means fluorescence it gives. So in herbal case, actually it is a more, I told you, it is a mixture of many chemicals, but for synthetic drugs, it is a single. So that's why single spot you get. We got that time, previous one. And this one, many spots of many chemicals with different color. That's why number of spots is extra here. So number of spot, position of the spots, intensity of the spots and color of the spots. So if it is matching with our standard, then only we can tell, yes, my sample also similar to standard. So what is HPTLC? To do all this work, to analyze this sample with HPTLC, you need one pre-coated plate that is available in the market. The two type of plates are available, TLC grade as well as HPTLC grade, but maximum analyst using TLC plate only. And instrument you need one band-wise application, so spray-on technique. So it will give you the equal mass distribution so that you can get the better resolution, separation from your chemicals. Then visualization. After separation, we will do the chromatography. Chromatography means where the separation is happening. It is simply, and tank is there, solvent mixture will be there. It will go capillary action, as I told you, it can be separated. Then we will take the plate for documentation. Documentation under 254 nanometer, 360 nanometer and visible. Of course, after derivatization, again you can do. So same plate you can use, many detection mode is there. Optional software is there and scanner also for quantitative analysis. And qualified instrument and 21 CFR Part 11 compliance. If it is optional, some pharmaceutical company require that one if they want to sell their product to America or USA or any Japan also it is mandatory. And nowadays I think Europe also it is mandatory, must be. Okay, not mandatory, okay.
only Japan and USA. And the cost investment is for HPTLC start from 12 lakhs to another 60 lakhs like that, depending on the configuration. Now, field of application, HPTLC field of application is a wide range. It can be used like botanicals, industry, QC, quality control, as well as R&D. If somebody wants to screen new chemicals, if they want to find out new chemicals from same plant or different plant from known chemicals, that also possible. So, all over the world people are working on that only. Then pharmaceutical application is then quality control and R&D, and food and cosmetics labs, aflatoxin analysis, pesticides, lipids, carbohydrate, colors can be analyzed. Environmental also, it can do the pesticides, the pH, polyaromatic hydrocarbons also. And forensic lab, of course, every forensic lab in India and all over everywhere, they are having already HPTLC instrument. Now, synthetic drugs generally field is the application is there for identification only and impurity limit test, as well as stability check also they do by HPTLC. For herbal, it can be extended to identification like fingerprinting, as I told you, falsification test, adulteration, if any adulterant has been added or not, how much percentage, stability check, marker based quantification, and screening. Screening, as I told you, that suppose neem, you know, in neem there is a azadirachtin is there, nimbin is there. If somebody want any other new chemicals can be find out which can be used as a drugs or which can make as a drug by doing the synthetic work, that type of work also people do. And this is the HPT instruments as per the USP are like that. You need one TLC plate, then applicator, then development tank, then documentation and software for quantitative analysis. That is actually not mandatory. Only European Pharmacopoeia recently they added that for instead of HPLC assay, any manufacturer they can do the HPTLC assay by software based profiling and sell to the Europe. Like pH, as I told you before, that European Pharmacopoeia instead of HPLC analysis, now they are considering that HPTLC fingerprint itself software can be scanned and get the data of volumes or area, and that can be used as a assay test. Now, this is the instrument and application. First is plate. How many types of plates are available? Silica gel. As I told you, 95% analysts use silica gel plate. Now, silica gel, what is there? Silica gel means in the silicon, with that there is a OH group and tetrahedral structure. Okay. Now, it is a generally, if you see the structure, OH group is there, that means it is polar in nature and it can form the hydrogen bonding also. So, it is highly polar. Now, RP layers, you know, RP means reversed phase. So, when that polar phase is transferred to any non-polar phase, it is called RP. So, you will see in HPLC, they are using RP column, C18 like that. So, when these, I told you the silicon, that OH group is being replaced by C18 carbon chain, that becomes a non-polar in nature. So, that is why it is called RP. Aluminum oxide also can be used as an adsorbent. So, that is for basic compounds. Then chiral phases are there. If you want to any stereochemical compounds separation, if you want to do, that also can be done. Then ammonia, cyanodiol bonded. Those are for acidic compound, basic compound if you want to separate. And cellulose. Cellulose means sometime if you cannot analyze on silica gel plate, because silica gel is a very active. So, your compound may like any antibiotic or something, it can react with your silica gel. So, that time you can use cellulose also. So, TLC, HPTLC plate. What is the difference of TLC and HPTLC plate? Now, mean particle size of TLC, it is around 15. So, range is 5 to 30 micrometer. So, average particle size is 15, and for HPTLC it is 3 to 8 micrometer, and 5 is the mean particle size.
So if there is a particle, less particle size means more surface area, and more surface area means you will get the better theoretical plate and you will get the better resolution. And the thickness of TLC plate is 250 micrometer or 300 micrometer, but HPTLC plate is 100, some company, and 200 also is there. So number of sample also you can increase to HPTLC plate. And then migration distance in TLC 60 to 150, but in HPTLC you can run very short distance, 30 to 70. Migration time 10 to 200 minutes it can take depending on the different solvent mixture, and HPTLC it is 3 to 20 minutes. So time saving also is there. Solvent use also it is reduced. And detection limit absorption, in absorption mode it may be 100 to 1000 nanogram for TLC plate. For HPTLC it is 10 to 100 nanogram. And for fluorescence it is further less, 1 to 10 nanogram, and HPTLC 1 to 100 nanogram. This is the detection range. Okay. So automatic sample application device, what is happening here? There is a stage. On that stage the plate will be there, and only power connection is required and one nitrogen gas. Through gas it will, the sample will be sprayed, and from computer will program the method, total parameters, how much we will apply in which tracks. So you see the below white that band length is around 6 or 8 we can choose, equal distance we can choose, and it can apply as per the programming. So different volume or same volume it will do. The advantage of spray-on technique is, so it will apply very slowly, so there will be no diffusion. So mainly herbal means there are so many compounds, so we need better resolution, separation. So that's why this band-wise application is recommended as per pharmacopoeia also. So there are different other companies, automatic sample application device, semi-automatics. Then chromatograph development tank. As I told you, this is the most important place. We will apply the sample on the plate. After that, we will take the plate and separation will be on this tank. This is different sizes are available. In the laboratory, everywhere I have seen that conical also, not conical, sorry, cylindrical flask also they use to develop the plate. So there are generally 10 by 10 centimeter tank is available, then 20 by 10 centimeter, as well as 20 by 20 centimeter tank. These three types, you can use different type of plate size depending on your sample numbers or track numbers. Now in the development tank, how it is there, actually we choose the solvent mixture. We will keep the solvent mixture into the tank. So now how to choose the solvent mixture, which solvent is suitable to separate my chemicals? You know there is the attraction, as I told you, affinity towards the solvent by the compounds. Now when we took the sample mixture, there are different compounds. Okay. Now different compounds means, you know, there is a polarity wise, if you check, there are three type of attraction is there. And polarity means polar sample, another one is non-polar. We can compare like that, polar, non-polar. Within polar, there are again two, protic, non-protic sample. So what are the polar? Non-protic means there should be hydrogen bonding. So any oxygen, any solvent or oxygen, nitrogen, like that way element should be there, and one hydrogen should be attached to that negative element, so that that compound is able to make the hydrogen bonding. And this is one attraction. All over the world, whatever, that is a universal attraction, the hydrogen bonding one. So everything attracted by this way. Okay. Another attraction is the non-protic. Non-protic means there will be only oxygen or nitrogen or any other, sulfur also, but because it is a del negative, other is carbon and hydrogen. So in that time there will be only polarity difference. So sulfur will be del minus or oxygen del minus, carbon will be del plus. So some electronic attraction will be there. This is little bit lesser than hydrogen bonding. Third one is, that is you must be knowing, you heard about that London effect.
You know, it is for non-polar chemicals. If there is a non-polar, what will happen? Non-polar and non-polar sample having attraction, when that moves, the electron will come to the site and it will attract. So the non-polar will take the non-polar. So that type of attraction. Because of these three reasons, we choose the mobile phase solvent system on the basis of if we know the compound name and structure. So you can identify which solvent will be suitable for separation of that those compounds. Okay. This is some common mobile phase generally used for alkaloid drugs, then flavonoids, glycosides, phenolic compounds, essential oil. Those are actually other alkaloids, flavonoids, whatever I am telling, those are secondary metabolites. It's a group, not a single compound. Alkaloids means there may be many. Flavonoids mean maybe rutin, caffeic acid, quercetin, okay, different type of chemical, but all are flavonoids like that. Essential oils also is there. Amino acids, you know there are around 20 or amino acids are there. I will show you amino acid also. And this is a mobile phase. There are tannins, bitter compounds, then anthracene, purine, and saccharides. Now after development, what we do? We take the plate. This is called documentation system. In that, there is a wavelength 3 type. One is 254. So I told you 254 means the plate will be green and spot will come as a black. Then that is a top one, that's curcuma. This is actually curcuma longa. And first 2 tracks. This one actually curcumin. This is a standard, and this total sample applied, this is called curcuma longa. So now what you can see from there, and this is actually under 254 nanometers we have applied, and green color from the background, plate background, and spot is coming as a black. And this is under 360 nanometer. Here the fluorescence is giving, and this is under visible light, yellow color. Okay. Now you see this is a standard, and this, if we tell curcumin is present in this curcuma longa or not, you can tell yes, because same position from sample also is there. Here also all are. Now can you tell me this curcumin and this one, which one is more? Because you see the intensity of the spot and intensity of this and this one also. So from there you can tell it is less than whatever I have applied my curcumin. So quantitative work also you can do, semi-quantitative. This is one way to detect. This is a multi-detection mode, so 254 nanometer. This one is 366. Now this one also you see, it is very less. This one is very high quantity. Here also you can see this is under visible light. So this way, and we can take the documentation I am telling, because there are 3 wavelengths from top and bottom also visible light, and camera will be there. Camera will take the photo and store, because whatever plate we have separated, now you cannot keep that for long time. Some plate life may be 1 hour, 3 hour, maximum 1 day, like that. So you cannot keep for longer time. So that's why immediately if we take the image, it will save there. So you can work on that. Those are the other instruments, documentation system. For other company, these are cost wise, because this DSLR camera, and this one is with digital camera, low cost. These are 3 wavelengths, as I told you already. This is you see black curcuma longi only, and these 3 compounds. This one is curcumin, this is bis dimethoxycurcumin, and this one bis dimethoxycurcumin. Because in curcuma longa there are 3 active compounds, known compounds are there: curcumin, bis, and dimethoxycurcumin. Now
Now you have seen that we have done without derivatization. Means whatever we sample, again I am going first, we make the solution applied by using sprayer, bandwise application, then development we did, we got the separation, and how we detect? By using documentation, different wavelength. We got the spot color, different image. Now all over world na, generally different places peoples are using different way. So if the percentage wise, if you see UV, that one is generally UV. So UV people are using around this 35-40% people. Some other way to detect the spot also is available. The one is their chemical reaction. I told you before, because on HPTLC plate, whatever the separated spot, we can do any reaction on that. So that's why I choose some information I wanted to give. How can we do the chemical reaction on the plate? There are, the first one is the pre-chromatographic separation. So pre-chromatographic separation means before chromatographic development, we will do the reaction. We will add some other chemical, so the reaction will be there. This we are doing to stabilize the compound. That is one. Second thing, to detect the spot. This is another reason, to get the better sensitivity. These three reasons we can do the derivatization. So pre-chromatographic derivatization, before, at the time of sample preparation you can do. You know, cephalosporin, one antibiotic is there, na? Cephalosporin, how they detect the cephalosporin? By TLC, HPTLC. They do the sample preparation time, they add some chemical, some sulfuric acid, nitric acid chemical, then yellow color formed. By that way they can detect the cephalosporin in that pharmaceutical field. Then application time, at the time of bandwise application, on that spot itself we can apply our reagent, so that reaction will be completed and it will give you better resolution. Other than pre-chromatographic, there are other way to call the post-chromatographic derivatization. In the post-chromatographic derivatization, we can do non-destructive as well as destructive. So how can we do non-destructive analysis? Now, suppose on the plate we are going to do any analysis like hydrophobic compounds. If suppose separated spots are hydrophobic, what will happen? If we dip our plate inside the water and take out, you will see there is a creamy colored spots are there, because silica gel is a polar. So silica gel will absorb the water. So that position will be very good, means transparent type, very bright. And that company derivatization means non-destructive, derivatization non-destructive. Then another way is the destructive method. Destructive means the chemical separated compounds will form a different compounds and you cannot go back again. Okay. So this is the, you can do the UV irradiation, you can go for thermal treatment as well as chemicals. So there are some important reagents, so which we are using for to detect the spot different, like anisaldehyde sulfuric acid to detect terpenoids, saponin, sterol, most lipophilic compound. Drag and drop reagents for alkaloids, heterocyclic nitrogen and polyethylene glycol, iodine vapor. Generally all laboratory you will see that they use iodine vapor to detect the spot, brown spot is coming. Then natural product and PEG reagent is there. This reagent is used to detect the flavonoids compound. Then methanolic sulfuric acid reagent is a universal. Whatever spot is there, you just spray or dip, you will see the spot color. It is very nice. There are the way to transfer the reagent. You can spray the chemicals on the plate. You can use the dipping method, then plate it at. Acha. Now, if we want to do any reaction, first thing is there, we have to transfer the reagent. Then on the plate, reagents will be there. Now, all reaction we cannot be completed in normal temperature. We have to give some heat sometime. So,
we suppose 100 degree or 120 degree temperature for 5 minutes, we have to give the plate heater. So this one is the plate heater, very nice. We can use that and see how the color changes and how much time it takes to changes there. So these are the post chromatographic derivatizing instruments. Then scanner, TLC scanner. In this scanner, there are 3 type of lamps are there. One is UV lamp, deuterium. Another one is the mercury for fluorescence, and tungsten halogen lamp for visible light. And wavelength range is there 190 to 900 nanometer. Means within that range, whatever wavelength, you can choose any wavelength, it will scan and give you the peak like this. So there is a caffeine in caffeine shampoo. In that you see there is a spot, standard and sample, and we can see the peak after scanning that intensity, it is giving the peak. And after that you can quantify by using calibration. This is called multi-level calibration. This is a software based quantitative analysis. The image we can transfer to the gray image, black and white. Then it will scan, the software will scan and give you the peak. This is low cost, no maintenance, nothing. Because TLC scanner is very costly, more than 40 lakhs only scanner. But here it is around 1.5 lakhs like software only. So no running cost, nothing. You can get the result. This is another example. You see this is red color, track number 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 3 spot intensity in bar graph. You can see all are matching, this one, this one. So that actually same amount we applied and you got the separation. Yes. Understood. Yes, yes. Okay. And this is the peak. After scanning, you get the peak and the volume also. And Karkumalanga, in Karkumalanga quantification, that is a linear graph, standard graph and unknown also can be quantified. This is some example of we have done our lab, that is a polyherbal drugs. You see the spot, different single drugs and mixture of the drugs. So under 254 nanometer. Now if you see there, you can see in the track number 3, so there is 1, 2 spot, light spot. Then under 366 same plate, we cannot see nothing, nothing is there. Then after derivatization, visible light also little bit is there. But you see here, after derivatization, you can see so many spots are there. So this multi-level of detection is helps for HPTLC. It is possible because all chemicals stay on the plate. So we can do many way. Now again another thing is there, you see the number 1, 2 spot. Here also little, here you see 2 spots are there. After derivatization, something is there. Like in this one is actually polyherbal drugs. Those are only single, raw materials you can tell. So this is the actually total fingerprint can be made as a polyherbal drugs with the raw materials. Now this is one quantitative analysis for gallic acid. Now these are the samples. We got the gallic acid here in this position from the sample, and this is 1 microgram, 2, 3, 4, 5, 6 microgram. Standard we have applied, and these are the samples. Now for intensity why you can see this spot and this spot is matching, and this one is matching. Na? So from there also we can tell it is more or less. Another thing, we have to take in this area of this spot and make the graph. This is the R value and this is the formula of the straight line, and you can do the quantitative analysis. This is one cardamom leaves. This is also different because I am very short of time, so I have to do quickly. Fingerprint of cardamom. This is another example for Piper nigrum and Tulsi. You see actually two sub. This is Piper nigrum, same volume, and this one is the Tulsi.
So we applied here. Under 254 nanometer, Piper Nigram spots are there very nicely, but here not that much. But under 366, if you see, this Piper Nigram not that much good, means peak spots are there, chemical. But here we can see the very nice from the Tulsi. So that means for Piper Nigram, 254 is very good wavelength, and for Tulsi, 366 very good for in this method. This after scanning got the peak with the result also same amount almost total volume. This is for Piper Nigram, and this is one neonaidine. So these are all the amino acids I have taken from one it's not our work. So there you see the different amino acid, and after neonaidine derivatization all are visualized. Generally amino acid is not a UV absorbing compound. You cannot see under 254 or any 366. But after neonaidine reagent spray, you can get the spot. But nowadays this neonaidine reagent, all reagents now are easily available. You can just buy, mix in the solvent and do. And this is one example, caraway fruit. And you see under 254 nanometer only one spot. And all are looking the same, but there are standard and different chemical. But under 368, after derivatization, you see these three and these three totally different, because this one is not containing this blue, violet color spot. So that means there is a differences. This is another arnica. This is turmeric. In the turmeric itself, some companies are selling nowadays. They nimesulide they added and selling that one. So this is the advantage of reliable identification and fingerprinting work. Many detection modes, as I told you. Then reliable fingerprinting. Then optional quantitative analysis also can be done. Most flexible. Very low cost, maintenance actually no maintenance, very fast. And sample preparation step. For HPTLC, the sample preparation steps is very less. So you just take the herbal sample, 100 mg in 1 ml, you just mix 1 ml of methanol, then sonicate, centrifuge, take the filtration, and they take the filtrate only. So cost per sample very low. Easy operation, and that's all. Okay, I have to go very fast class, that's why. Thank you very much for hearing that. Thank you, sir. I'm extremely sorry, and we apologize on behalf of SOMS that you have to wrap up within very fast. So nice to hear you. Now I would request Dr. Anisha Barik to please come up on the stage and present a small gift of appreciation to sir. Ma'am, please. Madam. Thank you. The Day 2 conference, the first half has come to an end, and we will again return to the same place after we are having lunch at 3:30 p.m. with the cultural program and the valedictory session. I would request all the students of SOMS and the outside participants, whoever have gathered with us since yesterday, to please